Hope this holiday you are enjoying. Enjoyment is the thing in life. Else, money, fame, whatever is useless. Enjoy to the hilt. Now, coming to the market, we have crossed the all time high. Everybody is very happy. But I don't know whether their portfolios are doing well or not. So, for me, I have always maintained I don't play Nifty Bank Nifty because it's a stupid instrument. In this new high, the the composition is very different than it was earlier in October 21 when Nifty hit 18,887. The time it was technology, Reliance, and whatnot. And now it is what? ITC, this, that. So, power grade from 180 it's 260, NTPC is 190. I'm sure nobody must be holding those shares. I'm not saying for sure, but generally, everybody must be holding Reliance and IEX and IRCTC, SRF, Navin Fluoride. Now, this is the beauty of this whole concept, Nifty. It is to lure people. A lot of barbs were made at me that now Nifty is at all time high. Okay, what's the big deal? Whatever I am holding has gone up almost 150%. So if Nifty has gone up from 1887 to 19,000, what's the big deal? Where did you earn anything? So refrain from taking barbs. There's no point in I comparing with you and you comparing with somebody. You look at your own balance sheet. That will give you a better picture. Now, suppose we say all-time high and you look at your portfolio. It's up 100%. You should be very happy. And if you see all-time high Nifty and if your portfolio is down, you will not be happy. And if you really want to survive in this market for donkey years like I have done, stop playing the speculative counters. And Nifty, Bank Nifty is one of the biggest one. You don't know what will happen the next moment. Avoid at all cost. Options strictly no of Nifty Bank Nifty. This I'm saying everybody over here, if you play Bank Nifty, your future in this market is very bleak. Maybe 1 year, 2 years, 3 years, at the most 4 years. Beyond that, you will not live in the market. And this market is just for you to buy shares and sell shares. This speculation is for the rich and the famous. For the rich and the famous. Don't indulge in it. वो सब स्पेसिस में आते हैं कि मेरा 5 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल है. मत करो भाई. वो चला जाएगा. आपको पता भी नहीं चलेगा और चला जाएगा. इधर जब पैसा लगता है ना, ऐसा लगता है फास्ट. कोई हिसाब नहीं है. The ratio of losses versus the ratio of profits is very, very, very skewed. आने को 20 रुपया है, जाने को 80 रुपया है. इसके लिए don't
gamble. Yeah, including myself. I don't know the whole composition of Nifty. इसका क्या वेटेज है, उसका क्या वेटेज है, वो थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन जब ये मालूम ही नहीं है तो मैं क्यों खेलूं? एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, एवरी मोमेंट. नहीं हो पाता मेरे से. हाँ, एक व्यू लिया, सौदा किया और भूल जावे तो बेटर है. लेकिन इधर तो एवरी मोमेंट यू ट्रैक, एवरी मोमेंट यू प्ले. व्हाट, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? इतना टाइम वो कोई अच्छा कंपनी का स्टडी करो. Okay, now today's topic, leverage. If you take leverage and if you have more than 1 or 2 crores and max 2 times or 3 times in this bull market, it's okay. You should take leverage. If you are under 50 lakhs, don't take leverage, because the game of leverage is good only if it goes with you. But if it goes against you, you will be doomed. You will lose a lot of money. So leverage per se is not good for beginners. Okay, there are exceptional beginners also. I realize that, and leverage per se is good in short periods of time. Leverage, if you do now, is very good. But if you would have taken a leverage 2 months ago, it would have been bad. So it all depends on the timing. Leverage will give you super normal profits if you know what you are doing is 100% right. So I would say taking leverage is not bad, provided you know what you are buying. If you are buying something stupid, you will be doomed. Now, when you play FNO, it is a leverage. It's 6 times leverage. So before you touch the machine, keep one thing in mind, that you are playing 6 times leverage game. You are smart enough to understand what the losses can be, what repercussions have. For me, I am always short in FNO market, but for me the leverage is not there, because it's never ever, the short is never ever more than the longs of my portfolio. So, okay, forget about me. So I'm saying in FNO also, the best thing you can do is, if you buy something, buy a put also at the same time. So your leverage becomes very, very less. Not leverage, your losses become very, very less, and the leverage increases many folds. Now, take for example Cummins 1900. If you buy one call, it's around no, sorry. If you buy one future, it is 2 lakhs and odd. And if you buy 1800 put, then it is some 70,000-80,000. So actually your leverage goes up by 2.5 times. But at the same time, you are stopped at 1800. So it's a beautiful thing, beautiful thing. Please implement this always, without fail.
You will make tons. See, I realize one thing. My IQ level is not that, not, or you can say very normal. I'm just like you, but I'm very focused. That's the difference. And I know all the trading techniques, what to do and how to do it, all that I know very well. If you sit next to me, you will realize I'm very fast in ordering. Now, I wouldn't know too much about the companies that I'm invested in also, but I have a general idea. So what I'm trying to say is, you should you don't try to be an expert in anything here. Just be normal. Just play with safety in mind, and bingo, you will make tons and tons of money here. Making money in the market is so easy, so easy, so easy. But suppose if we make a crore one day, next day we think we know everything and Amit doesn't know anything. So we just throw caution to the wind and whatnot and play so big that in next 2 3 days we lose 2 crores because the adrenaline rush to the mind is too much. I have devised a way, loss or profit, it does not affect me. I have conditioned myself. If you can also do that, you can be a very good trader because it doesn't affect you, a loss or profit. Now, all that happens only if your capital is huge, or not huge but substantial. Playing with a capital of 5 10 lakhs is no good. You should not be in this market. Believe me, with 5 10 lakhs or 20 lakhs, you should not be in this market. You should be in mutual funds. So if you are dabbling in this futures market with yes, I will send you a request. Accept it. Uh, in this market, sorry, I forgot. And this now, whatever may be the Nifty levels, most of the stocks will not perform. What will perform? Engineering and engineering capital, that is capital goods, finance companies, and MNCs. MNC is a great bet. You will always make money. Now, rest of it ICICI, अरे वो सब कचरा पट्टी में जाओ मत, क्या मिलेगा? वो वो 10 रुपया बढ़ने में थक जाएगा. The, suppose you have 100 rupees. What should be your goal? Not to make it 110. Your goal should be to make it 200, 300. That's why you come to this market. You don't come here for returns more than FD. No way. I wouldn't punt. If I see the return is less than 50% in 2 3 months, I will not touch that stock. Period. हाँ, स्कैल्पिंग वेल्पिंग ठीक है, पर क्या मतलब है? वेस्ट ऑफ टाइम है सब. If I think now, for example, Indigo, I was shorting it until 2300, squared up 2400.
I bought it. I'll buy it more till it keeps on going up on average. The idea of this statement of mine is, please, there is no such thing as that a perpetual view. Views change. And if you are adamant on your views, this is not the place you should be. Your views should be fickle, change with the times. If you don't change with the times, you are gone. And believe me, there you forget Nifty. I still maintain it will go down, but now it's on back burner. Now, what is in forefront is making money. My whole existence is to make money. और ठीक है व्यू का गोली मारो. Never ever stick to your view. Or trading is different. I might profess ये हो जाएगा वो हो जाएगा, and in the market I might do exactly the opposite. Because trading says you do what you see. You don't do what you think. Trading says you do what you see and not what you think. So I followed that principle. In simple language, ना कोई मेरा बाप है ना कोई मेरी माँ, सब कोई मेरा माँ बाप है, सब मेरा माँ बाप है, जो बोले बेटा उसके साथ पे चलता हूँ. ये है बाजार के लिए, लाइफ में नहीं है. प्लीज गलत मत समझना. The whole idea is never ever stick to a view if you are making losses. Change. बोलते हैं ना, चेंज इज कांस्टेंट. अगर आप चेंज नहीं होगे तो आप खत्म हो जाओगे. चेंज नहीं किया आपका व्यू, आप मर जाओगे. और ये बाजार ऐसा बाजार है, आप सही में मानो, कोई आपको अच्छा मेंटर मिल जाएगा ना, आप निहाल हो जाओगे. ये रन आएगा. I had predicted that in this market will dither around before the elections. But the way it has shaped up, we are almost in July now, are 10 months away. So I think there is no stopping for another 6-7 months. So make the most of it. And please have a mentor. Without a mentor, you are zero. Sorry, but I had to tell this. Somebody approached me. He said, I want to do trading through you with your advice. So I said, I'll charge 2%. So he's saying, मैं नहीं दूंगा. तो मैं बोला, मैं नहीं करूँगा. तो बोला, आपको क्या जरूरत है? मैं बोला, आपका कमिटमेंट चाहिए. तो बोलता है 50,000 ले लो. मैं बोला, निकल जाओ. Why I'm saying this? In Islam, in Quran, when they pray, Muslims pray, they say, या अल्लाह खर्चा बढ़ा, या अल्लाह खर्चा बढ़ा. जब तक आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा, आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी. गारंटीड है. तो आप देखेंगे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. बहुत सारा, हर चीज में एग्जाम्पल है. आप सोचिएगा, आप देखिएगा. या अल्लाह खर्चा बढ़ा, या भगवान मेरा खर्चा बढ़ा.
So, with this philosophy, you will make money. You will make money. Now, last thing I want to say is, if you play this market, if you decide that, yeah, I want to play it on the long side, buy the best of the shares, capital goods, finance, indigo, वो सब ले आप. And if you want, you feel, no, this is too much, I'm bearish. You can be bearish, and you should be bearish. Then there are counters like PVR, SRM, and so many of them. You can short them. So this market is there. You pick and choose what you want. You want bull, there is bull. You want to play a bear, there is a bear. And the how did I remain in this market for so long, in spite of so many debacles and so much of is that at some point of time I was short. That saves me. I'm not talking about investments. Investment is a different ball game. You will be very amazed to know your investments can become 5 times, 10 times, 20 times, 30 times, 50 times also. So, Srinivasan, I will send you a request. Please accept. And so be it. So, now, for example, I am saying 5 times, 10 times, 20 times, whatever. This Westlife Development, McDonald, is it is 13,000 crore market cap. It will become 60,000 market cap. 110% McDonald will become 60,000 crore market cap. Jubilant Food is around 36,000 with shitty pizza and shitty profit and loss and whatnot. Sapphire is good. Devian is very expensive. But all such stocks will create wealth for you. Understand that. And the top being Westlife. Another small cap is Alcana Metal. Please buy at least 10 shares or 1,000 shares or 10,000 shares. The day it starts to go up, now it's around 4,500 crore market cap. Easily it can reach 20,000 with various initiatives it has started. So one can really see there are too many stocks, but you have to find the best among the best. Here, I don't have any agenda. It's not that I am long or I want to do a propaganda. No. The idea behind all this is please make money. If I can help you in any way, I'll be ready to help you. I will guide you. But only thing is, do what I say, don't do what I do. If you do what I do, you will be dead in 2 days' time. So don't do all that. What I say you do. Yeah, Srinivasan, please take over.
Hi, sir. Good afternoon, everyone. The no, so I think it's a very good discussion. Basically, जो unimportant item है सर वो ज़्यादा attention खा जाते हैं. So the day-to-day movements and yeah, there are some blatantly overvalued companies. They deserve to be shorted, but that's a higher order skill. So I'm finding it's better to just find conviction around a few good long ideas and start accumulating. तो एक्चुअली ज्यादा बोरिंग होता है तो एक्चुअली लग रहा है सर ज्यादा लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट बनेगा. मतलब my process is now feeling very boring and I get the sense this is better. No, I fully agree with you. Making money is very boring, and losing money is exciting. Yeah, I know that. Yeah, I've done it for 45 years. So बीच बीच में आ जाता है, चल आता है, एक आध दिन थप्पड़ खा के आते हैं, but that's part of the game. And also another thing, what you said about process and what else you said, Srini? Uh, uh, Shifting out of the noise or day to day Yeah, का. yeah. Now, humble request. On your touchline, don't keep Nifty Bank Nifty. Don't keep any other stock other than what you are interested in. And see how it feels. Your mind will be at peace. There won't be disturbance. This whole game is against you. This whole setup is against you. How you don't make money, that's their main aim. So you you filter out everything, you cut out everything, and just see. It is so easy, so easy. Yeah. Yes, you want to say anything? Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, Nidhi, sir. Sir, basically, at present, sir, I'm focusing more on currency only. I'm not focusing on equity part and as well as the stock market. I mean, this scenario is not for me. No, So, I mean, no, I have no words for equity no. and all those things. Yes, I don't agree with you. We are players. For it doesn't matter whether it's up or down. We are not here to pass judgment. Yes, okay, after market hours, we might talk anything. But during the market hour, how do I care whether the stock is bad, good, ugly, nice, yeah? Oh. My whole idea is to make money, yeah. Whether by going long, short, selling puts, buying calls, buying puts, paisa आना मांगता है शाम. That's how I will speak to you. You need to change. Sure, sir. Sure, sir. Thank you. हाँ बोलिए भाई साहब. FI बोलिए. Sir, good morning. मैंने just join किया है तो let go through the conversation and let me also अरे tune in. कुछ नहीं बोला है भाई, बोलना क्या तू. अच्छा, जय श्री राम to everyone. Okay. हम सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहे हैं मार्केट के ऊपर. ओके, तो मार्केट अभी जैसे फ्राइड. नहीं एक मिनट. अगर निफ्टी बैंक निफ्टी है तो बोलना मत था. ओके ओके, तो हम तो मेजरली सर इसी में करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में रहता है हमारा. मैंने इट इज ओके. ओके थैंक यू. ओके, और परिमल खानोनकर. सर गुड मॉर्निंग. मेरा एक्चुअली गलती से माइक दब गया था. कुछ पूछना नहीं है, मेरे को सुनना है सर. ओके.
राठौड़ भाई बोलिए। अरे राठौड़ भाई बोलिए। राठौड़, अनम्यूट योर माइक। परिमल बोलिए। परिमल बोलिए ना। सर मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछना, मुझको लगता है कोई प्रॉब्लम है सेटिंग में, वो आप मेरे को स्पीकर से हटा दीजिए। राठौड़ भाई आपको पूछना है कुछ? या MNS। Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So I just wanted to ask कि अभी जैसे there's a little bit of correction in gold. So when do you see like what is the what could be the bottom of like gold prices and when could that happen? कितना खेलते हो गोल्ड? अरे सर खेलता तो नहीं हूँ मैं तो ETF में डाला था और आई एम थिंकिंग अबाउट की पुटिंग आई हैव सम मनी सो आई वाज थिंकिंग अबाउट पुटिंग इट in ETF. So I was thinking ki should I wait for some lower prices or put it now? अरे पुट इन वेस्ट लाइफ यार, you will make more money. चलिए। Yeah, who's next? BMM बोलिए। Sir, good morning. Wanted to ask, when special situations like some stocks are there where the promoter or the multinational company is buying out there or taking over some specific companies. Example end is like RHIM, which is going through at present with an open offer. So, is it an advisable thing to buy those Indian companies here in India? RHIM is a open offer. Yeah, there is an open offer which is asking for a 29% stake in the Vienna thing. So like if that gets affected to the part No, or the management changes. yeah. But what's the rate they are asking? So the Indian part they have not asked. They are buying out on the international part. So does it affect the Indian part as such? नहीं समझा नहीं भाई, बता। वहाँ पे जो listed company है वहाँ पे open offer आया हुआ है. Somebody is buying out that company in the international company. वो तो Right? 8-9 का PE वाला कंपनी है, छोड़ो ना उसको। अच्छा, okay sir. बोलिए। Who's next? Yeah, हेलो। सौरभ। हाँ हेलो सर। सर मैंने जो केनामेटल और वेसुवियस और कमिंस ऑलरेडी बाय कर दिया है, अभी होल्ड करने का शिफ्ट लॉन्ग टर्म के लिए। और सर ये अभी RHMI का बात किया ना, वो भी बाय किया है, वो भी आई थिंक आप अच्छा कंपनी है, राइट? मतलब बाकी के तीनों के बारे में आपका राय पता है, लेकिन RHMI के बारे में जस्ट वांट टू कंफर्म वन मोर टाइम। हाँ, instead you take my WhatsApp number and confirm on। अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। ओके ठीक है, थैंक यू सर, बाय। बोलो बोलो भाई बोलो। शर्मा आर बोलिए। नमस्कार शरद भाई। नमस्कार। शरद जी, सोलर इंडस्ट्रीज कैसा है? ये भी MNC में आता है क्या? नहीं, आइडिया नहीं है भाई साहब। ठीक है सर।
मेरा की ट्रेडिंग. Yeah, hello. Good afternoon, everyone. So, topic is leverage. So, I will put my view on leverage. Basically, at it's basically the time to take the leverages against the shares, against the cash, against your deposits, against your strength, whatever the strength you have in hand. But the problem is nobody has the courage to take the leverage and the carry forward. In spite of they are saying that the bull run is there, the mad bulls of the market. They are not taking the leverage against their holdings or personal strength. The lack of confidence and lack of courage will always lose the opportunity in the market. So always I just putting my view that try to take the leverages and take the benefits. बराबर है, सही बात है. Courage, because what happened for the leverage में कितना भी बुल रन बता दो या कोई भी कितना भी बुल रन बता दे टीवी पे इधर उधर न्यूज में जहाँ पे भी, बट जब भी पैसे डालने की बात आती है तो कोई डालता है नहीं, क्योंकि वो करेज मार्केट में मिलता नहीं है, कोई बेचता नहीं है कि खरीद ले. करेज तो खुद को जमा करना पड़ेगा ना, खुद का. बहुत बढ़िया बात बोला भाई, बहुत बढ़िया बात बोला. आज की तारीख में एचडीएफसी के सामने किसी को प्लेज करके लेवरेज करने के लिए बुलिश बनने को बोलो तो कोई नहीं करेगा. फ्री के शेयर्स पड़े होगे तो भी कोई नहीं कर, छाती में लेकर घूमेंगे रास्ते पे. वो रास्ता भी ठीक है, उनको नहीं करना है. सी लेवरेज कौन करता है जनरली? और ट्रेडर्स इन द मार्केट. इन्वेस्टर्स नहीं करेगा, उनको मैकेनिज्म भी नहीं मालूम है और उनका एप्टीट्यूड भी नहीं रहता है. आई थिंक सो इट्स ओके यार. अभी आप करते हो, मैं नहीं करता, यश करता, और जाने दो ना, जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा. और लेवरेज पर से इज बैड. ओके, हाउ डू यू डिफाइन गुड टाइम्स? How do you define good opportunities? They can turn against you also. So it's a double-edged sword, ना यार, क्या करें? No, but what happened? I mean, I have seen many times that what happened if you are in the bear run, if you are actually in the bear run, and if you are talking about the bullish, if you are actually in the bear run and market is going upward, and you are talking about bearish things, so people will say you are a fool. Example. And if you are in an actual bull run and you are saying, okay, put your money, put your extra funds in the market now, this is the time, then nobody will give you the comments, nobody will react. I mean, I'm just on this topic, it reminds me of something, a saying that bears make the most money in bull markets. Bears make more money in a bull market, and bulls make most money in the bear markets. It's absolutely true, because no bear is stupid enough to withstand this onslaught of rise. They would join the party, and I have noticed bears are very courageous. They don't bother too much about any consequences. And suppose you are playing with 100 lots, he will play with 2000 lots. So
in a short span of time, he will overtake you. You being a bull, the bear will take over you. Similarly, in a bear market, bear is wanting to short, and the bull presses the button. Chalo, allow 2000 lot. So I made this statement, and it's absolutely true. Think it over. Bulls make the most in a bear market or at the end of the bear market, and bears make the most in a bull market and at the end of the bull market. That's that. यार आप अपना नाम वो क्यों नहीं रखते हो? काहे को ये सब मेरा की समथिंग समथिंग? चलिए बोलिए, और कुछ बोलना है? नहीं, this is my firm name basically. हाँ, तो फर्म नेम को क्या करने का है भाई? तेरा नाम रखना, प्यार से बोला सुन सकते हैं. नहीं, ये क्या basically this is just an interaction on Twitter. That's why I put the separate page for this on the name of firm. ओके, गुड इनफ. और कुछ बोलना है भाई? No, that's it. थैंक यू. प्रहलाद जाना, बोलिए. गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? हाँ, ठीक है. सर हम लोग अभी एक वेस्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, तो डिस्कस कर सकते हैं उस पर कुछ? हाँ, आपको वो कुछ मालूम है? बोलिए. मालूम की बात तो ऐसा नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही फंडामेंटल्स और रेशियोज की बात कर रहा था. और सर आप बहुत बार बोलते हो कि पी मैटर्स, बट आई बिलीव नॉट एवरी टाइम पी मैटर्स, बिकॉज बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, viability of the product for 5 years, 10 years, lot of thing matters. तो अगर मैं specifically Westlife की बात करूं, तो अगर उसका मैं trailing की देखो तो is quite high. अब उसके लिए multiple reasons है, and अगर आप EPS तू किधर था? मैं बोला 60,000 हो जाएगा मार्केट कैप. हाँ, तो तू काहे का पी का मेरा बात करे? नहीं सर. नहीं, एक मिनट. हाँ बोलो सर. शेयर बाजार में है ना, कोई रूल लागू हमेशा नहीं पड़ता. अग्री सर. या तो जब तो मैं वो बोला पी देखो, इसका मतलब ये नहीं कि सब में पी देखो. आपको पता होना चाहिए किस में पी देखने का, नहीं देखने का, कौन सा मैच्योर बिजनेस है, कौन सा नया बिजनेस है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो अभी आप चालू करो वेस्ट लाइफ का, बोलो. हाँ, तो आई एग्री विद दैट पॉइंट सर, क्योंकि हर बार पी इज नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर, और हर स्टॉक इंडस्ट्री मॉडल से वो अलग अलग व्यू हो जाता है. मुझे सिर्फ अभी मैं ये देख रहा था उसका फाइनेंशियल सर, एक साल का अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, आइडियली 2020 में जब लॉकडाउन आया था तो भाई साहब स्टॉक में है ना, देखिए आई विल टीच यू हाउ टू एनालाइज. यस सर. छोड़ा मत देखो, आगे का फ्यूचर देखना है. यस. वो पीछे देखने वाला कभी ऊपर नहीं आया. लाइक I am saying in 4-5 years it will be 60,000 coming. Hello. Yes sir. From 13,000 it will go to 60,000. Okay. Do you have anything to counter that? I am sorry, आपका क्वेश्चन आवाज कट गया सर. नहीं, are you willing to counter that? सर आपका क्वेश्चन ये 60,000 नहीं होगा. नहीं सर, आई एक्चुअली बिलीव इन दिस मॉडल, एंड आई मीन मैं वेस्ट लाइफ को देख रहा हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम को, कैसे वो लोग ने अपना बिजनेस एवरी टाइम वो लोग ने चेंज किया है टू केटर टू द इंडियन मार्केट्स. तो आई डोंट बिलीव कि उसका चला जाएगा करके. न्यू जनरेशन कमिंग, वी आर लाइक मोर एंड मोर टुवर्ड्स देयर, जैसे वो लोग करते हैं with small product changes, they actually capitalize the market. So I have no doubts with that. तो मेरा जो एक सिंपल क्वेरी है, या कुछ और बोल सकते हैं उसको, कि आई बिलीव कि आज स्टॉक उसका 52 वीक हाई पे है, एंड आज यहाँ पे पहुंचा है, तो इसके ऊपर भी जा सकता है. व्हाई नॉट?
तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे आज अगर उसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस हैज टू गो हाई, वरना तो वो होगा नहीं। तो किस तरीके से अपने को करना चाहिए सर? लेट्स से कि आई एम ए नाइव इन्वेस्टर, आज मैंने 861 पे इस पे इन्वेस्ट किया, कल अगर वो नीचे आया 800 700, तो मुझे किस तरीके से बाय करना चाहिए टू होल्ड इट फॉर द 60,000 मार्केट, या फिर नहीं, एसआईपी करके आपने छोड़ लिया देना है कि चाहिए नहीं फॉर अ लिया? स्मॉल इन्वेस्टर? सर मैं अभी इसको स्टडी कर नहीं रहा था कि मैं लूंगा करके। नहीं, आपने लिया है कि नहीं लिया है? नहीं सर, मैं कल या फिर मंडे लेने वाला हूँ उसको। अच्छा। और कितना लेगा भाई? छोटा इन्वेस्टर हूँ मैं, थोड़ा एसआईपी में ही आया हूँ, भले केना मेटल हो या दूसरा जो स्टॉक अपकमिंग बोलते हो या जो भी इंडस्ट्रियल बोलते हो, थोड़ा थोड़ा ही लेता हूँ। दिस वुड बी पार्ट ऑफ माय रिटायरमेंट पोर्टफोलियो, so दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज। और मैं वैसे ही स्टॉक How old लेता are हूँ you? जो प्रोडक्ट, सॉरी सर, How old are you? आई एम 37 सर। So another 20 years, 8 years till retirement, बराबर है? यस सर। ओके, एनीवे देखिए, आपका अप्रोच एकदम रॉन्ग है। जो भी कंपनी आपको पसंद आता है वो ले लो ना। इतना छानबीन क्या करते हो? सीखना भी जरूरी है ना सर जब आपका। डॉक्टर आपको एक टैबलेट, एक मिनट, और हाँ सर, हाँ सर। डॉक्टर जब भी एक टैबलेट देता है, हाँ तो आप कितनी बार गूगल किया कि ये टैबलेट में क्या क्या है? अब सच्ची बताना। सर, देखता भी नहीं हूँ, सीधा उठा के डाल देते हैं, फिर बाद में जब जरूरत पड़ती है तो देखते हैं कि क्या खाया था और क्या नहीं कर गया। Okay. Similarly, if you think that the product is good, the management is good, just buy it. Don't इतना माथा पची मत करो यार। 2020 में ये था ना वो था। उसका एक एडवांटेज क्या है कि अगले 2-3 साल में 300 स्टोर और खुलेंगे, 350 है, तो देखना ना क्या हो जाएगा यार। आप करो, सिर्फ ग्रोथ करो। स्टोरी तो है इसमें। Thank you so much. Yeah, Abhishek Chabra. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. मैंने तो आपका धन्यवाद करना है सर। वो आपसे कुछ दिन पहले मैंने चंबल फर्टिलाइजर के बारे में पूछा था, तो आपने कहा भेज दो। मेरे पास वो 10 साल से थे, तो 5 गुना भी नहीं हुआ, और 4 लाख का पोर्टफोलियो था मेरा उसमें। वो मैंने निकाल के तो इसमें डाल दिया सर, एमएनसी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और कुछ? थैंक यू। Anand, your expert opinion? अनंत रिक्वेस्ट भेजा है तेरे को। Okay, anyway, so we'll, yeah. Good afternoon. Tough. Either it is here or on tomorrow we will open higher and we should close lower. Whatever happens by end of the day tomorrow, I feel the market top will be in place or it is already in place. जैसे last time भी Friday को जब भी बोला था, I had said that the true trend change date is on 30th, but वो 1-2 दिन ऊपर नीचे when we are talking of such large patterns,
is what I was looking at. So the pattern that जो मैं देख रहा था 16,800 से 19,200 19,100 19,000 बोल रहा था, वो पैटर्न तो मोटा मोटी कंप्लीट है. तो यहाँ से घूमेगा तो पहला टारगेट सीधा 16,200 ही आएगा. दूसरा कुछ नहीं दिखता है मेरे को. So my view is extremely bearish at the moment. And जितना bullishness ये लेवल पे दिख रहा है पब्लिक को, it should be a suicidal point for a lot of people. Whoever is buying here, मेरा व्यू ये है कि ये मार्केट बहुत भयंकर वीक होने वाला है in the next 1 week 15 days. So whatever it is will be very clear by end of next week. And this is the time to be ultra cautious. So I am really not happy for the market bulls, and feeling very good for the bears. And what will actually go down practically, ये फेज में जो कुछ भी नहीं बचना चाहिए. Even the frontliners, the mid caps, whatever, everything that is showing strength, all of them should take a beating. ये आएगा क्यों अभी कोई नहीं बता सकता. ये गिरने के बाद में ये क्यों गिरा मालूम पड़ेगा. जस्ट जनरल थोड़ा व्यू है. देयर something major which is cooking, especially in US dollar. That could be the reason. War is not a reason. War, there should be nothing going on there. But जो है hidden है अभी तक, and whatever is going to come next, only this very smart money knows. That is where the turns will come. And आज रात को S&P 500 should make it very clear. S&P 500 I am expecting should close at least around 4,310 4,312 के आसपास. If S&P 500 comes to 4,312, tomorrow morning we can wake up to a very weak Nifty. I am not going by whatever it is showing right now, because the turn is really round the corner. ज्यादा कुछ हुआ नहीं. कल 19,11 लगाने के बाद में वापस आके जो पैटर्न बनाया, इट वाज लाइव ट्रेडिंग में मैं वो कैलकुलेट करके दिखाया हाउ 19,111 शुड बी द टॉप. दिस सीम्स टू बी अ मल्टी ईयर, मल्टी वीक, मल्टी मंथ टॉप. तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग market to be down for at least 6 to 8 market direction to be down for at least 6 to 8 months from here. हाँ, बीच में थोड़ा बहुत rallies आएंगे, but those rallies will be swift, and they will be big, and they will only mislead people to buy more, which is exactly what is happening right now. Behavior for the traders, investors, जो ट्रोलिंग दिख रहा है, जो the bigger names, what they are talking, everything is pointing to a top here. And many of the bigger names have even called 10 times हो जाएगा निफ्टी यहाँ से अगले 10 साल में ये हो जाएगा. All that seems will just, I feel, will just go down the drain. It is a very dangerous time. We are exactly standing like how we stood in January 2020 and January 2008. So expect a repeat. That is my view. People may have a bullish view. I would say all the best. Let the market show if there is any real great strength. Beyond 19,400 अगर जाता है ये, beyond 19,400, 19,500, that is the only time where I will even think of bullish है. Otherwise, there is absolutely no strength left in the market. खत्म हो गया है. That is my view. No, yesterday I read a tweet. Yes. Of one journalist, business journalist, said Indian market share in 2023 is 3% of the international markets. Okay. And she expects it to go up to 8% by 2050. 2050. हाँ, तो मैं मन में सोचा ये बेवकूफ पागलों जैसा बात क्यों करते हैं लोग. अभी जब अपने को पता नहीं है कि अपनी अगली सांस आएगी कि नहीं, तो यार 2050 तक का तो मतलब कुछ वियर्ड सा हो रहा है अभी. और दूसरा बात है,
आनंद भाई, हाँ अपने को तो मंदी हमेशा लगता है, हाँ हमेशा लगता है, राइट लेकिन बात क्या है, अभी वॉल्यूम नहीं है, फॉलो अप सेलिंग नहीं है, करेक्ट करेक्ट तो क्या होता है कि बेचते हैं, ये अभी 2 दिन पहले 60,000 चोला बेच दिया, हाँ 12 रुपया बढ़ गया, काट दिया 14 रुपया में। तो no, ओके the point I'm making is not about my trade. हाँ I'm saying there is no follow up यार। सर आप फॉलो अप देखते हो, आपको मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं दो ही चीज देखता हूँ। मैं टेक्निकल प्राइस पहले क्या कर रहा है वो देखता हूँ, दूसरा पैटर्न देखता हूँ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। अरे वो पर तेरी आप बात सुनिए मेरी बात, बराबर है, सुनिए मेरी बात, मैं भी पूरी सब पूरी बोलने देखा दो। था प्राइस एक्शन, ये पर पैटर्न में एंडिंग डायगोनल जब भी होता है तभी लास्ट स्टेजेस में वॉल्यूम डाउन होता ही है, वॉल्यूम पिकअप नहीं होता है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, नैरो मार्केट नैरो होता जाएगा, पीपल विल बिकम एक्सट्रीमली बुलिश, वॉल्यूम्स विल कम डाउन। दिस इज ऑल कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न, इसमें नया कुछ भी नहीं है सर। ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले भी हो चुका है। अगर आप और लार्जर पैटर्न देखोगे, 2008 का जो 8 में जैसा वॉल्यूम था, उससे भी बहुत ज्यादा पीक हुआ था 2020 में। उसके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट एंड है, ये फिफ्थ वेव है। थर्ड वेव में पीक हो जाता है, फिफ्थ वेव में एंड होता है, वही हो रहा है। नया कुछ नहीं है सर इधर, सब नहीं नहीं, कुछ पहले हुआ है, अभी पिकअप अरे होगा, अब आपका स्पीड पिकअप होगा वॉल्यूम। अरे भाई साहब, हाँ जी, तुम कौन सा नया बात बोलते हैं, सालों से सदियों से चला आ रहा है, कुछ करेक्ट, चेंज नहीं होता है, हाँ तो इस बार बट भी नहीं होगा, वही सिर्फ बोल एक रहा ही हूँ। होता है, नैरेटिव चेंज होता है, दिस टाइम इट इज डिफरेंट, यस बट करेक्ट, इट इज नॉट डिफरेंट। इट इज नॉट राइट 100%। वी आर एग्जैक्टली स्टैंडिंग एट द टॉप, प्लस और माइनस 1 or 2 days 3 days, दैट्स इट। But I am also with you in the. Matlab, I am always in a bear camp only. I can't be a bull. But looking at the markets, there are यस pockets. There are pockets which राइट, are showing super strength, and one can go long over there and short the rest. That can be a great strategy. या But no, another thing I want to mention over here is a lot of people talk about shorting and now. Believe me, shorting is the most difficult thing in this market. At times, I also get flustered. तो आप लोग का तो क्या हालत होएगा? तो ये बेचने का वो छोड़ देना, गलती से भी मत करना, अब पैसा ही पैसा लग जाएगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देता हूँ। अगर आप जुलाई का 18,600 का पुट देखोगे, 18,600 18,700, दे आर ट्रेडिंग फॉर 20 रुपीज एंड 30 रुपीज। एक बात बताओ, मार्केट 3% नहीं गिर सकता एक महीने में? गॉड फॉरबिड यहाँ से 3% मार्केट गिरा तो 600 पॉइंट होता है, 600 पॉइंट हुआ तो 18,400 दिखाता है। 18,400 तो 18,600 का पुट 20 रुपए में बेचा, तो यू आर गेटिंग अ 1:10 ट्रेड देयर। इज इट नॉट wiser to take that trade than looking at too many other things? So this market is so skewed in favor of the bears right now कि सबको इतना भयंकर तेजी दिख रहा है, तो ऊपर लेकर जाने वाला कौन? सब बाय करके बैठे हैं, पैसा नहीं है पब्लिक के पास। ऊपर से एक सेलर आएगा, सब कुछ लेकर जाएगा एक ही झटके में। We will see within 3-4 days everything will become very clear. अभी ये इवन द स्पेस को क्लिप करके ट्रोल करने वाले भी आ जाएंगे बहुत सारे। नहीं यार, वो ठीक है यार, करने दो ना। नहीं, और मैंने देखा तुम ये कुछ गलत देख रहे हैं ऑप्शन,
70 रुपीज है। सर कहाँ है? एक सेकेंड, अरे कल ही तो खरीदा सर, 20-25 नेक्स्ट में। वीक का लिया होगा यार। नेक्स्ट मंथ का सर, क्या कर रहे हो सर? ऐसा थोड़ी करते हैं सर। देख ले, मैं देख लिया हूँ। एक सेकेंड, अभी बताता हूँ सर, मैं खोल ही रहा हूँ मेरा। निफ्टी 27, sorry, Nifty 27 July put 18,000 I bought. 18 rupees. 18 to 20, sorry, not 600, 18,000. Because I am seeing it go much deeper. 18,600 would be about 100 rupees. Is it not worth the risk? 70 rupees. 70 rupees. Is it not worth the risk? At 19,000, you will not take a risk on at least 100 rupees? अरे boss, I tried to buy of 12,000 also, but the broker said no यार। अरे आपका ब्रोकर, आ जाओ, आपको अच्छा ब्रोकर देता हूँ दूसरा, जो बोले, जो एनएससी देता है वो करने देगा। नहीं, मेरा ब्रोकर बहुत अच्छा है। Of course, I am sure. Without margin. सर ये पब्लिक में मत बोलो प्लीज। विदाउट मार्जिन अपने को जो बेनिफिट मिलेगा बंद हो जाएगा, पब्लिक में मत बोलो सर। नहीं, नो प्रॉब्लम। नो margin, no debit, nothing. Yeah. See, we have traded so many donkey's years with the same broker. We have enjoyed different ways. We continue to enjoy some little benefit, which is true. Same, अपना भी वही है। चलिए, हाँ, right. Anyway, चलो। अमन, कुछ ऐड करूं शरद भाई? हाँ, बोलिए। See, if you take an extreme long-term view of Nifty, there is a 21-year cycle which is ending on Nifty. The problem of this particular pattern is we are in a stage where we are ending several years of bull market, which goes back all the way up to 1987. 87 से जो चालू हुआ वहां से लेके अभी तक का ये 5 वेव का पैटर्न बना. So this is a multi-year, multi-month, multi-week, multi-day top which is being formed. The repercussions of this are very scary at the moment. मेरे को भी जब ये चार्ट देखता हूँ तो डर लगता है. Second thing is there is something called the Uranus cycle which ends for Nifty exactly around here. Now what is the implication इसका? 21 साल की तेजी थी. 21 साल की तेजी में कई बार मंदी भी आता है, तेजी भी आता है. So we had all these smaller cycles inside. Now this 21-year up cycle is ending here. What it is calling for is a 21-year down cycle. So people who are talking about 1950 to 2050 में 8% हो जाएगा and all, जितना मैंने पिछले 100 साल का 150 साल का डेटा स्टडी किया, इसका implications बहुत डेंजरस है. Unfortunately, none of the living people have seen what is going to happen at the end of this. The only time we have seen this was in 1929, और वो कोई आज तक जिंदा है ट्रेडिंग करते हुए मेरे को नहीं लगता. So this is, it is sensible to pay a lot of attention at least for the next 1 to 2 months and be very careful what is happening. After that, the scene is very clear. So, मैं कुछ बताऊं? बोलो. ये जो आपका थियरी है ना about and all that. We got freedom in 1947. Correct. Our stock market was existence before 1900. Okay. 1892 BSE started. So I said before 1900. Yes, correct. Now we underwent a major shift or major change in 1891 with Narasimha Rao and Manmohan Singh's budget. 1991. Sorry. Correct. So
it underwent a great change, Right? everything, no controls and all that shit. Uh, Then in the 2008 meltdown, right? I'm not talking of the stock market, but the businesses remained unscathed. They were Right? doing bit okay than the rest of the world. Right? And there is a perception that India, being a controlled economy as of now, also, we Hmm. have a lot of barriers. Yes. So, our thing can be very different. And this cycle, super cycle, I don't think Correct. is applicable. Let's play it by the year. Whatever happens, we'll see. हाँ 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 से- दो दीज एक्सट्रीम वंस तो सिर्फ एक जनरल व्यू के लिए है कल सुबह उठ के मार्केट 300 पॉइंट अप है कि 300 पॉइंट डाउन है वो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पहला लेवल तो जो अगर आप पूछोगे पहला लेवल क्या देख रहा हो मैं तो बोल रहा हूँ 18,500 तो देखे पहले 18,500 के बाद में देखते हैं फिर आगे क्या होता है so it is always step by step by step. So let's see what happens at 18,600, 650. Then I will look at seeing what happens at 18,000. उसके बाद आएगा 16,800. So between these two, these are my three broadly तीन level है. 18,500, 18,500, 18,600 is what immediately I am expecting. Then 18,000 is the next expectation, which I think 18,000 जुलाई में हो जाना चाहिए. उसके बाद में 16,800 होते होते अगस्त एंड तक आ सकता है. सो ब्रॉडली दैट इज माय लार्जर व्यू एंड डे टू डे कैसा चलता है वो डे टू डे देखते हैं. But another thing is, from what I observe, there are no more players left in the market, Nifty, Bank Nifty. करेक्ट. So your audience is very limited. यस करेक्ट. यस So करेक्ट. I you would be much more popular if you talk about stocks which are going to go up and which are not going to perform. सर अपने को कौन सा पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतना है. हाउ आई डोंट इवन केयर व्हाट Okay, एनीवन थिंक्स. wrong choice of words. हाँ सर. Wrong पॉपुलर मीनिंग के ओके चलिए आप भी इस शब्दों पे क्यों मारा मारी करते नहीं ऐसा नहीं है. यू विल बिकम मोर लाइकेबल जितना लाइकेबल हो उसे और लाइकेबल बनोगे बस अरे सर ये दो बार नो गलत हो नो जाओ ये नो पब्लिक डिसलाइक करना चालू करता है सर. आपने भी नो देखा Anand हमने भी देखा. हाँ सर. Anand very honestly यस सर. if I am able to talk about certain stocks and my sphere is very limited people like to hear that and they make money yeah. So I feel so happy if somebody comes up over here and said yes I made money. That's it. और क्या वो थोड़ी 100 रुपया देने वाला है मेरे को. गाली देके जाएगा सर. चलिए थैंक यू. Yeah, Siddharth. Anand, can I ask Anand a question? Yes. Anand, how do we leverage your prediction? Means you told us that you sold all your stocks and you bought the 18,000 put, right? Who is this? Vips. Oh, okay. So, I mean, we can go ahead and sell the stocks? No, I'm only giving my view here. I'm not giving a trading advice here. I'm not qualified to give you trading advice. No. Even I'm not asking for that. I'm just saying that how do I leverage this? Keep a mental stop loss of what you think the market should not do. Yeah, that's best. That's the best way. That you said 19,400, right? What? You said that you will change your view if it goes above 19,400, right?
19,400. Huh. So Correct. you right now, if you are feeling bullish, keep a No. keep a point where below which you should not hold the market. That is simple as that. No, See, I'm not bullish on if the the beginning. market has indeed taken a breakout, okay, there are few things to understand here. The market day before is 2 days back was at 18,650, Yeah. which is more or less the high it made in October 2021. Okay. Then Yeah. in a matter of 2 trading sessions, it has taken a support there, and it has taken a seeming breakout above 18,800, Right. which was the high of December 2022. Yeah. Yeah. Now, God forbid, if it goes below this level of 18,600, that is the point where you should start thinking twice. अरे ये 18,600 क्यों hold नहीं कर रहा है? Because having taken a breakout, it should not break below that. It should take support there and go up. Correct. That's So right. that is the point where the intelligent trader should start thinking. See, breaking out by itself is nothing great. But when it comes on a breakdown, does it take support from the point where it has broken out? And because these two highs were very close together, so I would take the lower point, which is 18,600. 18,600, 18,500 अगर तोड़ता है, तो सोच लो ये ट्रेंड चेंज हो गया. So 18,300. तो आप 18,300 लगा लो, 18,000 लगा लो, 17,000 लगा लो. That is your comfort. So theory says once it takes a breakout, it has to come back to test the high. Yeah. अनंत, ये विप्स को तेरा नंबर दे देना तुम लोग. आप वो ब्लॉक्ड है मेरे से. वो कुछ ज्यादा 1.5 आना बनने की कोशिश किया था पहले, तो मैंने ब्लॉक कर रखा है उसको. मैं 1.5 आना बनने की कोशिश नहीं करता हूँ. वो देखो चालू हो गए ना फिर से. I am not a 1.5 आना. I am an idiot. Okay. नहीं, वो तो मैं ही हूँ. आप सोचते हो कि 1.5 आना हो, मैं 3.5 शाना हूँ. चल ना यार, क्या फर्क पड़ता है. शरद भाई ये स्पेस के ऊपर है ना. No, my point is how to leverage it. Forget your point. ये स्पेस में अगर आप कुछ नॉलेज दे सकता है या ले सकता है, वो तो दे दिया. नहीं बात करो. वो तो दे दिया. ओके सिद्धार्थ, अब बोलिए. सिद्धार्थ भाई बोलिए ना. शरद सर, गुड आफ्टरनून. मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे अनंत भाई इतना बियरिश हो रखे हैं मार्केट में, तो कल 12,000 करोड़ की एफआईआई ने बाइंग करी है, तो वो क्यों कर रहा है फिर बाइंग? मतलब यहाँ हम थोड़ा सा अडानी का स्टॉक था, छोड़ना. अडानी का स्टॉक में बर्ड डील हुआ था. अच्छा. तो मतलब वो कोई बाइंग, मतलब एफआईआई बाइंग नहीं है वो. नहीं. एक और बात ऐड करता हूँ भाई, मैं अगर बेरिश हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में 100 टाइम्स फ्रंट ऑफ 100 करेक्ट होऊंगा. आई कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. सो दैट इज वाई आई ऑलवेज सेड, ये मेरा व्यू है, ये गलत भी हो सकता है, और अगर 19,400 के ऊपर मार्केट जाता है तो आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग. दिस इज अ मार्केट, इट इज अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या है वो डिस्कस करते हैं. नहीं आनंद, हाँ, I have said so many times that I am wrong 87% of the times. करेक्ट क्या सर. है? हाँ, और मेरा पैसा है, मैं कैसा भी लूटा दूं, कैसे भी कमा लूं, दूसरे को क्या है. सही बात है. एग्जैक्टली. तो सिद्धार्थ भाई, आपका सवाल था कि एफआई का फिगर आया 12,000 करोड़, उसमें 2-3 अडानी के डील थे. और बताइए. बट सर यही पूछना था मेरे को, तो बस थोड़ा सा सर, अनंत सर इतना बियरिश हो रखे थे, तो थोड़ा सा मूड उस टाइम को लेके बड़ा बियरिश हो गया एकदम. तो मैंने कहा यार, इतना बड़ा सब लोग इतना स्ट्रेंथ में हैं और एफआईआई भी बाइंग में है, बट सर देखिए बट सर इतना मतलब कॉन्फिडेंशियल इतना हाई है कि मतलब बहुत हाई कॉन्फिडेंस है इन लोगों सर का. तो इस वजह से बस मेरा क्वेश्चन था, और कुछ नहीं, वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है आपको, आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं? सर बस कभी कभी सुनने के बाद थोड़ा सा लूज तो हो ही जाता है, जब आप इतने बड़े बड़े स्पीकर बोलते हैं. ठीक है,
तो फिर आप शेयर बाजार के काबिल नहीं हो। ठीक है सर। सर जितना भी यहाँ बस उतना सीख रहे हैं आप लोगों से। नहीं मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, दूसरों से इन्फ्लुएंस मत हो या कीजिए। सर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा मैं तो अपना है, बट मैंने जो मेरे दिमाग में था वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया, इसलिए और आपने बोल दिया तो मैं ठीक है। नहीं, यहाँ पर है ना, जो भी ओपिनियन आप सुनते हो कौन सा भी स्पेस में, दिमाग में मत लो यार। ठीक है, ये सब नॉइज है। ठीक है सर। बट सर आपकी तो जितने भी आप जो भी बोलते हो सर, वो तो मैं बहुत गौर से सुनता हूँ और मैं उस पर देखता भी हूँ सारी चीजें। तो इस वजह से मैं नॉइज पे कैसे बिलीव करूँ? आपकी नॉइज पे तो बिलीव नहीं करता मैं। आपका तो जो भी वर्डिंग्स है मैं वो सुनता हूँ बहुत प्रॉपरली। No, at times I also go wrong. उसमें क्या हो गया? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। जो क्वेश्चन था वो पूछ लिया। थैंक यू सर। Yes, Saurabh. गुड इवनिंग शरा सर। गुड इवनिंग। शरा सर, मेरा मार्केट पे व्यू ये है कि अगर मार्केट यहाँ से फंसाना शुरू करे, रिटेल को ट्रैप करना शुरू करे और 19,500 तक ट्रैप करता जाए और फिर वापस 18,000 पे आ जाएगा तो आधे से ज्यादा भाग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर दिसंबर वगैरह का कॉल पुट का देखें, अगर 19,000 का स्ट्रैडल, तो पुट्स तो बहुत बेचे गए हैं, दबा के बेचे गए हैं और मतलब किसी को भी तो कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अभी 18,000 पे नहीं आने वाला है, 19,000 के नीचे इतनी बुरी तरह से नहीं जाने वाला है। तो 18,000 आएगा, 19,000 पहले, 19,500 पहले आना चाहिए, फिर 18,000 आएगा। और फिर अभी 2 इवेंट है, 2 इलेक्शंस हैं बड़े बड़े। तो एक 5 स्टेट्स के इलेक्शन होने हैं दिसंबर में और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन है मार्च में। तो 2 बड़े इवेंट है। ये बड़े इवेंट ही डिसाइड करेंगे कि ये एक्यूमुलेशन चल रहा है 18,000 से 19,500 के बीच में या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये जो आप बात बोला ना, हाँ, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट नहीं हमको मेरा लगता मानना है एक मिनट हाँ, एक मिनट हाँ, बट मेरा मानना ये है कि कुछ भी हो जावे, इंडियन मार्केट में ज्यादा मंदी नहीं आ सकती। रीजन बता नहीं, दो एक हाँ, मिनट। ये ऑल द स्टॉक्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई बेचने को आने वाला नहीं, इंडियंस कभी बेचते नहीं है। तो मैं अरे अभी दादा, म्यूचुअल फंड में तो लोगों टाइम, को फंसा रखा है ना। सर आप मुझे बोलने देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ 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 हाँ, बोलिए। इंडियन पब्लिक बेचती नहीं है, कुछ भी हो जावे। जेट एयरवेज भी अभी तक पकड़ के रखती है, तो इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा मंदी आना मुश्किल लगता है। बात सही है, बड़ा मंदी नहीं आएगा, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को निकालने के लिए तो एक मंदी आएगा। सर आप क्यों हमें गाली देते हो? मैं भी रिटेल हूँ, आप भले ही HNI हो। दादा मैं FIS के साथ हूँ, FIS के साथ हूँ। कौन है FIS? आप देखने गए थे? ये जिनका FIS डेटा आता मतलब है। इंडियन प्रमोटर्स ही होते हैं। वो छोड़ दो ये टॉपिक। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये अमन और रोहित भाई स्पीकर रिक्वेस्ट भेजो। Hi everyone. Hi sir. Hi Anand sir. सर भूल से रिक्वेस्ट सेंड हो गया था। ठीक है। योगेश, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून। ये क्वेश्चन था मेरा कि ये जो इंटरेस्ट रेट अभी इतना बढ़ गया है यूरोपियन मार्केट्स में, US मार्केट्स में, इसका असर तो इक्विटी में आएगा, आज नहीं तो बाद में। तो सर ये मतलब आपसे भी और आनंद जी से भी क्वेश्चन है कि ये जो चार्ट में क्या लग रहा है सर, इंटरेस्ट जो US 10 ईयर या इंडियन 10 ईयर यील्ड, और सर दूसरी क्वेश्चन ये है कि ये निफ्टी 50 USD कैसा लग रहा है सर चार्ट में, आनंद जी से। और शरद जी आपसे भी व्यू था इंटरेस्ट रेट। नहीं यार, इतना भारी भारी सवाल पूछ मत। मेरे कोई काम का नहीं है। मेरे काम का है क्या लेने का, क्या बेचने का।
सर जी इंटरेस्ट रेट में क्या है अभी देखिए 8.5% चल रहा है सर इंडिया हाँ, में। तो पर मेरे को क्या लेना देना है, 2% था तो भी लिया नहीं, 10% होगा तो भी लेगा नहीं। मतलब see, the whole purpose of this space was to interact with people and make them understand what to buy and what to sell. इतना भारी भारी डिस्कशन ये रोहित भाई, आनंद भाई वो करेंगे आपके साथ। आनंद भाई बोलो, इंटरेस्ट रेट बोलो कुछ बोलो। अरे छोड़ो सर, अपन टेक्निकल एनालिस्ट है, चार्ट देखते हैं, ये वो फंडामेंटल अपने समझ में नहीं आता है। एज फार एज द इंटरेस्ट रेट चार्ट इज गोस, इट लुक्स लाइक इट विल टॉप आउट आफ्टर अबाउट अनदर 3 quarters. बट दैट इज भारत का इंटरेस्ट रेट तो टॉप हो गया ना अनंत। अरे सर, ये एक्चुअली मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है अभी तक। सपोज मेरा व्यू आपसे अलग है तो आपको एक्चुअली खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो बेवकूफ है मेरे ऑपोजिट में बोल रहा है। तो मैं बेचूंगा या मैं खरीदूंगा तो मेरे को खरीददार या सेलर मिलेगा। उल्टा सवाल पूछते हो, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सर रियलिटी ये है कि कल 6 महीने बाद में क्या होगा किसी के बाप को नहीं पता। मैं भी एक कंजेक्चर कर रहा हूँ, कुछ स्टडी कर रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, कुछ करके मेरा इन्फ्रेंस निकाल के मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको अलग लगता है तो इफ इट इज ट्रू यू शुड बी वेरी हैप्पी। जब कोई मैं मंदी में होता हूँ, अगर कोई तेजी में होता है तो मैं अपने आप को आई फील वेरी कंफर्टेड। यार कोई तो है, मैं बेचूंगा तो खरीदेगा। अगर सारे मेरे साथ बेरिश बन गए तो मार्केट कहाँ रहा? मार्केट नहीं रहा, ये तो 2 दिन में नीचे आ जाएगा। देयर इज नथिंग टू गेन। सो अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम, व्हाट आई फील इज राइट फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम। 3 महीने बाद में मार्केट अपने दोनों में, अगर ऑपोजिट व्यूज है, दोनों में एक व्यू फॉलो करेगा। द वन हु फॉलोज द व्यू विल बी हैप्पी, द वन हु डज नॉट फॉलो विल नॉट बी हैप्पी। आज अपन शाम तक डिस्कस कर ले क्या होगा। कल सुबह 9:15 से पहले ये निफ्टी 0.01 भी नहीं बदलेगा। कल मॉर्निंग में पता चलेगा आज क्यों आपका ये है, मेरा ये व्यू है, मेरा वो व्यू है। वी ईच प्रेजेंट आवर व्यूज। वी if we find anything of value, we ask a couple of questions, try to learn आप और मैं कुछ मिस कर रहे हैं क्या। आप ये सोचो, do a study of the last few years market has unfolded. Whenever markets have reached the topping phase of interest rate, markets have also topped off. उसके बाद में डिक्लाइन आता है, वो डिक्लाइन के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी ड्रॉप होता है। नाउ मार्केट्स हैव रीच्ड टॉपिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। अगले 6 महीना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसके बाद में मार्केट जैसे कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन जैसे कम होगा, देन वंस इन्फ्लेशन कम्स डाउन तभी इंटरेस्ट रेट कम होगा। इन्फ्लेशन ऑलवेज फॉलोज बिहाइंड, सॉरी, इंटरेस्ट रेट ऑलवेज फॉलोज बिहाइंड इंटरेस्ट रेट। ये आपको समझना पड़ेगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट ऑलवेज फॉलोज बिहाइंड इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली वो सबसे पहला इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। बीच में फॉर 1 or 2 weeks और 1 quarter बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल प्रेशर वो कम कर सकता है या स्टेडी मेंटेन कर सकता है। बट इफ इन्फ्लेशन कंटिन्यूज गोइंग अप, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। नाउ डू यू सी इन्फ्लेशन गोइंग अप? पॉसिबल। इफ जब तक वो बढ़ेगा ये बढ़ाते रहेगा, जब इन्फ्लेशन कम होगा उसके बाद में वो कम करता जाएगा। दैट इज द फर्स्ट गोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, नॉट मार्केट्स। मार्केट्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद सेंट्रल बैंक्स। डोंट लुक एट मार्केट ऊपर है, ये इसको मैं इलेक्शन तक ऊपर रखूंगा, इस तक ऊपर रखूंगा, नहीं होता है ये सब। ओनली व्हेन यू स्टडी पिछले 100 साल का डेटा लेके स्टडी करो, अच्छे से समझो क्या हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी बहुत अपने आप आ जाएगा, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। What do I see? I see interest rate going up for 2 quarters. Do you see? No. Fine. No, according to me, all this discussion is useless. Useless, exactly, sir. No, we have to only look at the demand and supply and forecast whether this demand is genuine and how long it will last.
So I looked at it, and I think it will last for a couple of years. Indian investor has woken up. Never in my life I have seen so much of interest by locals, and they provided so much support. It's almost impossible to bring in a downfall. So my take is इंटरेस्ट रेट ये वो कुछ नहीं, खाली डिमांड सप्लाई समझने का है और क्वालिटी ऑफ शेयर समझना है. And again I'm saying the purpose of all this is to make money, not to get into an argument with each other. ये वो है नहीं यार. Let's meet up. Let's talk about how to make money. That's it. क्या रोहित भाई बोलिए. ये टॉपिक अच्छा एक तो खैर आई थिंक रेयरली यू हैव अ स्पेसेस इन द डे टाइम आई जस्ट सॉ बट द टॉपिक इज लीवरेज. ठाकुर ओके. ये leverage topic, how did it come about? I was just trying to think. No, leverage meaning now what I see, I am always bearish. If you ask me 3 o'clock in the night, I am bearish. But looking at the markets, I feel there is no place for bearishness now. Now in this situation, how do I leverage? What do I leverage? How much should I leverage? That's very important, because if a novice or a person who has 50 lakhs and he leverages, he will lose his shirt. And if I have 2-3 crores or more, it won't give me a dent. So I was trying to tell people that use leverage now, but with limited exposure or whatever, and how it is good and how it is bad. That's a nutshell of it. Because if we play futures also, it is 5 times, 6 times. I play with call puts, then the leverage is 13 times, 15 times. So it depends on how much you should take. Yeah. Risk management, so it's a completely different topic. Options में at least we manage through premium. Futures requires very different management. But when I read leverage, I thought ki whether there is leverage in the system, which is something that I am assessing is not the case, because पहले के कंपैरिजन में मार्जिन फंडिंग, सब ब्रोकर्स का बुक, ये सब जो होता था वो काफी कम है. फ्यूचर में पहले भरता था जो 2008 में, it used to be 80% of the FNO, now it is only 15% of FNO. Options is 85%. वो एक्सपायर हो जाता है, फिर बन जाता है, फिर एक्सपायर होता है. Now definitely through the buying of selling of options there is a certain loss happening to people who are trading. But it is in a certain limit and incremental. So in general, leverage of investors is missing, which would happen when a major top or something is taking place. But one thing which at least somewhat 2021-22 have done is shaken out the places where there was weakness or where there was no growth. A lot of stocks are down 70-80% also in that phase. So that's a clear signal from the market ki what has to be avoided. And where the strength is where you try to continue to ride. That is, I think, the approach. But we didn't get, I mean, see, I think last time when... Sorry. No, you continue then.
No, last time also, I think I and Anant were discussing whether it will go to 19,200, it will stop at 18,800. I thought it will stop. Then it pulled back very little, barely 20-day average तक आया 18,700 से घूम गया. So again, I am thinking then this will run away. It will not stop because stocks में rotation होता जा रहा है, sector में rotation होता जा रहा है. So that expectation of correction is gone for the time being. Rohit, No, but just wanted to say this should highlight to everyone that we agree many times and we disagree many times. The public ko, I just wanted to point it out. See, it doesn't matter whether I agree with Rohit or not. I will also trade the same market. He will also trade the same market. I will also see the market from my point of view. He will see from his point of view. He may feel bullish. I may feel bullish. I may feel bearish. He may feel bullish. Doesn't really matter. ये आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? मेरे को ये लगता है, मेरे को वो लगता है. हमने शेयर किया. भाई ठीक है, थैंक यू. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू. ये बोल के क्यों नहीं चल सकते हो आप लोग? एक दूसरे को गाली क्यों देना है पर्सनल? No, that is because most people do not know how to execute. The failure happens in execution. Two people with different views at different times can still end an entire financial year with a 70% success ratio or of whatever success ratio or risk reward being winners are better than losers and still make money. So actually from point to point it doesn't matter, but what matters is how we executed what we were thinking and managed risk and so on, which is a completely different thing and most people don't want to do that. Moment I use the word risk management on my own platform, people say you are finding a पतली गली से निकल रहे हैं. सीखना नहीं है किसी को. वही तो प्रॉब्लम है. चलो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है तो रोहित को क्वेश्चन पूछता हूँ. पूछ लो यार. भाई, the problem is I'm a little confused. Have you seen the Dow? Yeah. Or S&P 500? Yeah. तेजी लग रहा है. अब आपको तेजी लग रहा है तो क्यों लग रहा है? एक्सप्लेन करो ना प्लीज. So I don't have any sell signal to put it in an. शरद जी आपकी आवाज कट रही है तो we cannot make out what you're saying. Sharad, your voice has been cracking, so we couldn't get what you said. No, it's breaking up. Your words are breaking up. You can hear me. You can hear me. Right. Yeah, now it's better, I think. Okay, आ रहा हूँ. हाँ जी बोलिए. हाँ नहीं, आवाज आ रहा है क्या? हाँ बेटर हो गया. Anand? Yeah. You are able to hear me? Okay. Yeah, loud and clear. Okay. Sharadji's voice is gone. So no, your question was to me on the Dow. So I'll just mention. See, when I'm looking across the board. So how I have started to approach many of these markets because of rotation is look at all the indices. So when I look at Dow, I look at S&P, Nasdaq, then I look at even the US sector indices. Right. So it's not just Russell, but I'm looking at Dow Jones Materials, Dow Jones Banks, Dow Jones Oil and Gas, Dow Jones, whatever, all the Dow indices, okay, on different sectors. So it makes sense आता है कि is this like,
very easy for people to say कि नहीं सिर्फ AI stock चल रहा है बाकी सब बकवास है. Completely wrong. So that is why yesterday I put out a chart of the materials index, which is like been rallying for like 20 days consecutively. Okay. Recently you're seeing a pickup in oil and, I mean, not so much, very marginal pickup in oil and gas. Right. You saw the automobiles index rally very hard in the last quarter. Yeah. So this, so where was the weakness? The weakness was essentially in the small caps, which is Russell. It was in the banks, which was where the crisis was. Both of these, according to me, are stabilized, which means there's possibly no downside to the US banks, and the small caps have started to participate a bit on the upside. Okay. So basically, I'm sensing that the US rally is now in the point where it becomes more broad-based and things that were not participating start participating. Dow also is one of them because Nasdaq has done better than the Dow has done, but the Dow has not made lower lows. If I take a weekly chart, it is making higher highs, higher lows. If I take a monthly chart also, it has crossed back above the 20-month average, which did not happen in 2008 or 2000 till the bear market was over. So sort of those signals have been negated for the time being. So unless I get a fresh signal that something is weakening in terms of momentum or the broad, so many indices we are watching, they all start topping out or losing momentum, then it would be a sign ki kuch problem hai. So to that extent, yesterday also I posted a chart on Twitter showing how many stocks are above or below 200 DMA for even US S&P 500. Right. So that number also has risen from 36% to what 65% or something right now, or 60% maybe. And I will watch whether that keeps advancing, because if more and more stocks are participating, that number should keep rising. And as long as that is happening, it is incrementally getting better. Okay. Fair enough. Got your point of view. Yeah. Thank you. Hello, Anand sir. Hello. Anand sir, can you hear me? I have a question to ask. Yes, your voice is low, but we can hear. Because I'm sounding low. तो आनंद सर, मेरा सवाल है, I'll try to put in Hindi because आप सब हिंदी में बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग, जैसे आपने जितना भी बाजार अब तक देखा है, या रोहित जी ने देखा है, शरद भाई ने देखा है, जितना भी मार्केट देखा है, क्या ये मेरा सिंपल सवाल है, मैं जो समझना चाह रहा हूँ, क्या आपने ऐसा देखा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 10 years, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, अब एक ये चेंज आया है मार्केट में कि फेक ब्रेकआउट्स या एक्सट्रीम जंप्स, मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलता हूँ, एक्सट्रीम जंप्स आने शुरू हुए हैं कि रिटर्न टू द मीन वापस आ जाता है एक्सट्रीम जंप्स देके, यू कैन कॉल इट ट्रैप और वैसा. तो क्या आपको लगता है कि इनकी फ्रिक्वेंसी अब ज़्यादा है रादर देन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सेशंस विच मार्केट हैज फेस्ड इन द लास्ट couple of years before 2010 or before 2000? क्या ऐसा लगता है आपको? I don't think so. I don't think there is any significant change. In fact, market has become, in my words, I call it trending in nature. It has become far more trending after 2020 than it was before 2020. क्योंकि 2013 से लेके 2020 के बीच में ज्यादा विपसॉज हो रहे थे, लॉन्ग कंसोलिडेशन फेजेस हो रहे थे, एक साल तक बाजार अटक जाता था, जैसे कि 2011 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, फिर 2018, 19, 20 में मिड कैप्स गिर रहे थे, लार्ज कैप बढ़ रहे थे. उस तरह के कई पॉजेज आए, फिर भी वो बाजार संभला रहा और ब्रॉडली ऊपर की तरफ जाता रहा. ये तो वन साइडेड मूव्स चल रहे हैं अभी 2021-20 के बाद जो देख रहे हैं हम लोग, वन साइडेड है. इसमें तो फॉल्स का केस बहुत ही कम है. मैंने ये सवाल क्यों पूछा, मैं आपके साथ मैथमेटिक्स, एक बेसिक मैथमेटिक्स शेयर करता हूँ. वर्ल्ड में कोई भी चीज़ होती है वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड मूव करती है. कोई भी चीज़ हो, इवन हवा हो, अगर आप सूक्ष्म साइड पे जाएं तो बॉडी का सूक्ष्म शरीर भी अनाहत चक्रा के ऊपर नीचे मूव करता है. तो बाजार का मैं पिछले 1 साल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और मोटा मोटा 1 साल से मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करता आ रहा हूँ. तो नॉर्मली इन द लास्ट 1 year मार्केट, आप मतलब लोग सोचते हैं कि 17,700 चला गया, 16,800 चला गया, 18,000 चला गया, 19,000 चला गया.
बट टेक्निकली पिछले 1 साल से बाजार एक टिपिकल रेंज में घूम रहा है और एक ट्रेंडिंग स्लोप लाइन थी डाउनवर्ड्स, उसको कल या परसों इसने ब्रेकआउट किया है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चैनल को, बट फिर भी बाजार ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। नॉर्मली हमेशा क्या होता है, ऑल टाइम हाई तब लगता है जब आप किसी भी ग्रेविटी के पुल को ब्रेक करते हैं। मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे कि बहुत फालतू बात है, कि नॉर्मली जब हम सैटेलाइट भी मूव करते हैं ऑन द अर्थ ऑर्बिट या मून पे, मार्स पे, कहीं पे भी, तो एक सर्टेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, उस थ्रस्ट के साथ किसी भी सैटेलाइट को फेंकना पड़ता है, तब जाके वो किसी एक टेंजेंट पे जाके वो सैटेलाइट टिकता है, वो मूव करता है। तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी या वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पुल बाजार ने ब्रेक नहीं किया है। तो अब इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज एन एक्सपर्ट, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स बाजार ने ब्रेकआउट तो नहीं दिया है, ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, बट एक ट्रेंडिंग जो स्लोप लाइन है वो तोड़ी है। वो मेरा जो फेक आउट का एग्जाम्पल ये था पूछने का, उदाहरण मैं पूछना इसलिए चाह रहा था कि ये भी फेक आउट हो सकता है अगर फेक आउट की फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ सालों में या पिछले 1-2 साल में बढ़ गई है, तो इट कैन ऑल्सो बी अ फेक आउट, बट द मार्केट हैज नॉट मेड अ टॉप एंड इट्स मैथमेटिक्स, मतलब नोबडी कैन डिनाई इट। कोई कुछ भी कहता रहे, मैथ्स के ऊपर 2 into 2 को कोई 5 नहीं बना सकता, दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन। बट कल ऑल टाइम हाई नहीं लगा आपके हिसाब से? सर ऑल टाइम हाई मैं किसी भी प्राइस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करता हूँ। नॉर्मली पहले जो भी साइंटिस्ट या चीफ मार्केट टेक्नीशियंस हैं, वो उसको मतलब नॉर्मली पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपने पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल यूज करते आए हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का अगर मीन स्क्वायर निकालते चले जाएं तो आप किसी भी प्राइस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं कि जो ग्रेविटी जिसको नॉर्मली आरव भाई अब बहुत हो गया। ग्रेविटी वो सैटेलाइट बनाता है ना, सो नहीं, मालूम आप है। बोलते हो तो मैं बंद कर देता हूँ। अब बंद कर दो, चलो। नहीं, इतनी जल्दी है, तुम मेरा सुनने को तैयार नहीं हो तो बंद कर दो। नहीं सर, मैं आपको, आपने बोला बहुत हो गया, तो बहुत तो हमेशा स्टॉप, फुल स्टॉप से खत्म होता है ना। लाइफ में कोई भी चीज अगर बहुत हो जाती है तो वो तो फुल स्टॉप पे खत्म होती है। नहीं, इसे लेकिन ये फुल स्टॉप। नहीं, अगर आप समझते ना, ये स्टॉक मार्केट का स्पेस है, यहाँ क्या मैं लूं और क्या बेचूं, वो अगर आप कुछ बता सके तो फायदा है। ग्रेविटी क्या करना है मेरे को? नहीं सर, देखिए, मैं स्टॉक मार्केट में खाली लेऊं बेचूं अगर ऐसा रहता तो फिर तो जितने लोग काम करते आए, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आपका स्पेस है, आप इस स्पेस के नहीं, मालिक हैं। मेरा स्पेस होवे ना होवे, मैं तेरे को बात बोलता हूँ। तू अगर सिर्फ लेने और बेचने का वो सोचेगा ना, वो तो ही इधर पैसा बनेगा। ज्यादा वो सोचेगा ना, 56 के भाव में जाएगा तो। और पैसे की जरूरत नहीं हो तो सर? हाँ, पैसे का जरूरत ही नहीं हो फिर? तो मेरे को फोन कर, टाइम पास करना है तो फोन कर। सब लोग का टाइम मत बिगाड़ना। हाँ, वो मैं इसलिए फुल स्टॉप की आज्ञा मांग रहा था आपसे। थैंक यू। ये सूझ मनित सर, मेरे आप रिस्क मैनेजमेंट का रोहित जी बात कर रहे थे, मेरे को उसी बारे में बात करना था कि रिस्क मैनेजमेंट के आप जैसे आनंद जी हैं, वो उन्होंने 18,000 का पुट ले लिया है, वो उन्होंने डेबिट पे कर दिया है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इतना कम है, तो उसमें कैसा रिस्क मैनेजमेंट करोगे? क्या आप फार ओटीएम पुट्स को सेल करोगे 3 या 4 टाइम्स? इंडिविजुअल ट्रेड्स का रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है ओवरऑल का। ओके, मतलब आप एक स्क्रिप्ट को लॉन्ग, एक स्क्रिप्ट को शॉर्ट, मतलब ऐसे करके रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, बाकी आपका बीटा मार्केट से थोड़ा बहुत कम हो जाए। नहीं, मेरा पूरा जो भी फ्यूचर्स का पोजीशन है उस पे मैं रिस्क मैनेजमेंट गिनता हूँ। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट गिनने बैठूंगा तो तकलीफ होगी भाई। कि मने आप इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी करने जाओगे ना, मतलब लोग करते हैं जिनको बहुत ज्यादा गणित उसमें लगा के करना है,
बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बोलिए, अगर व्यू सही है तो मुझे खड़ा रहना है, अगर व्यू गलत है तो मुझे काट लेना है। रिस्क मैनेजमेंट कैन हैपन इन पोजीशन साइजिंग कि चलो मुझे 1000 शेयर लेने हैं, 200 करके लेने हैं कि पूरे एक साथ लेने हैं, बट जहाँ पे लगे कि गलत है तो काटना ही है। उसके सामने में अगर कॉल बेचने लगा, पुट बेचने लगा, कॉल खड़ा है उसके से ऊपर कॉल बेच दो, नीचे पुट बेच दो, ये जो राजू भाई कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, वो एक बार में सब उड़ जाता है फिर। वही तो बोलो भाई। तो I don't do complex strategies. सर रोहित जी बोल रहे हैं। Oh, sorry sir. So I avoid doing those complex strategies कि कॉल खड़ा है उसके सामने कुछ और बेच दो, क्योंकि दैट इज अ पॉइंट ऑफ रिकग्निशन कि मैं गलत हूँ, मेरा गलत हो गया इसलिए मैं सोच रहा हूँ पुट बेच के वापस कमा लूँ, कि कोई दैट इज अ नॉट अ एप्ट स्ट्रेटेजी। नहीं रोहित जी, मैं आपसे ऐसा नहीं बोल रहा कि जैसे अपन मैं खुद पर्सनली 8 जून से बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट हूँ, तो क्या है कि 1 महीना हो गया, वो उसमें कुछ आ नहीं रहा है, तो मैंने क्या ओटीएम पुट सेल कर दिया कुछ, ताकि वो जो ताकि मार्केट से रेंज बाउंड रहे, कुछ आती जाती रहे। वही ना, सी इट्स द सेम थिंग आप जो बोल रहे हो कि जब हमें अपने व्यू पे डाउट होता है हम ऐसा कोई एक्शन लेते हैं कि पुट बेच दो या कॉल बेच दो उसके सामने, बट दैट इज न्यूट्रलाइजिंग द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट। So either you think that the view is wrong, okay, or you're trying to earn it back in some other way. So I'll rather spend my time and energy in finding the next opportunity, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप ये स्ट्रेटेजी करोगे, आप सोचो आपका दिमाग कहाँ जाएगा, आप पूरे टाइम उस स्ट्रेटेजी को ध्यान देखते रहोगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक, instead of focusing on where is the next opportunity. And sir, what is your view on oil? ऑयल इज ट्रिकी, अभी कितने दिनों से एक ही रेंज में अटका हुआ है, वो 80 75 80 जो भी है। इट इज नॉट क्लियर वेदर इट हैज बॉटम्ड आउट, इट इज नॉट क्लियर वेदर इट इज इट कैन ऑल्सो फॉल टू 65 वन लास्ट टाइम एंड देन अगेन मे बी नॉट। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको सिर्फ देख रहे हैं हर दिन कि कोई क्लियर सिग्नल दे। I'm asking like it is ignoring every bullish news, like every supply cut is being sold off. तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी उसका बॉटम नहीं हुआ। करेक्ट, तो देयर इज अ रिस्क। मैंने इसलिए बोला मैंने कि एक रिस्क है कि कहीं पे एक पैनिक आ सकता है 65 64 62 डॉलर्स तक का, और फिर बॉटम हो जाएगा। वो एक पैनिक, बट वो पैनिक भी आएगा कि नहीं, क्योंकि कितना टाइम हो गया वो भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग बैठ के देख रहे हैं कि होगा नहीं होगा। इट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर। Okay. And my last question is how to particularly use leverage to your own advantage. Use leverage to your advantage. Yes, I mean I use it like to diversify my positions. Like I have like some X capital, so मतलब एक कैपिटल में ज्यादा मार्जिन ना लगे, तो इसलिए 3-4 में थोड़ा थोड़ा कर दिया लेवरेज लेके। I don't know exactly how to answer the question. I mean, if you are right, leverage is in your favor. That is the only thing I focus on. I should get something right. Everything else follows. If I can't, so you're talking about pyramiding. Like if you are right, you will lever up your position. No, not pyramiding. I'm saying I have to be right on anything, whether it is the market, whether it is the stock. उस पे अगर मेरा व्यू सही बैठेगा 60% ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम, तो पैसा बनेगा। ओके, तो चाहे लेवरेज हो नहीं हो, अगर मैं गलत होऊंगा तो लेवरेज में भी मरने वाला हूँ। सो यूजिंग लेवरेज टू योर एडवांटेज मीन्स दैट यू आर राइट, सो यू आर लेवरेजिंग। इफ यू आर रॉन्ग एंड यू आर लेवरेजिंग, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। Rest of it is all comes under a topic known as position sizing, which means that
which involves pyramiding. But I think I don't know whether pyramiding is the right word, but definitely you size your position in the direction of the trend. Some people will call it pyramiding, but not against the trend. क्योंकि which is called buying the bottom. मतलब गिर रहा है और ले रहे हैं, गिर रहा है और ले रहे हैं, नहीं, वो तो कभी मत करना, क्योंकि ट्रेंड कंफर्म होता है तभी हम उसको डबल करते हैं. अगर कोई चीज हमने ली है और वो मेरे फेवर में जाता है और कंफर्म करता है कि हाँ जो हमने सोचा था वो हो रहा है, तो उस चीज को मैं डबल कर रहा हूँ. दैट इज यूजिंग लेवरेज टू योर एडवांटेज. बट इफ आई बाय समथिंग, इट गोज अगेंस्ट यू एंड आई डबल इट अप, that is not accepting that you were wrong in the first place. Okay, thank you, Rohit sir. A lot pleasure to talk to you. Thank you. I had one question, Rohit sir. So basically, like in the last 2 years, if you see, especially in the last 2 years, the dollar index especially have like shown a bullish move, and usually I have heard that dollar index usually have a negative relation with the commodities. So what's your view on overall dollar index? Because I can see dollar index is now breaking a crucial support of close to 102, if I'm not wrong. And what's like your view on commodities in the years to come? On a 5-year or basis, I am bullish on commodities, which means that I eventually think the dollar will go down. Shorter term, it has been bouncing around up and down, but even from last year September, it has come down. So September to I think March, the dollar index was down. Then it has rallied back a bit, but I believe it will head down again. Thank you, sir. सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछो भाई पूछो. सर दो क्वेश्चन हैं. एक तो अनंत सर से स्पेसिफिक है, दूसरा क्वेश्चन जो भी एक्सपर्ट मतलब लेना चाहें बता सकते हैं. तो कल मैं अनंत सर का लाइव देख रहा था, वो बता रहे थे कि जैसे एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो ठीक है, दिखने में एंडिंग डायगोनल जैसा ही लग रहा है. अब उन्होंने जैसा वेव मार्क कर रखा था तो 14,140 से 18,600 वेव 1 बता रहे हैं, ठीक है. फिर 15,183 तक वेव 2 है, 18,800 वेव 3 है, 16,800 वेव 4 है, और अभी वेव 5 सब 5 चल रहा है, राइट. बट जैसा अगर इसी स्ट्रक्चर को मान भी लें कि ये एंडिंग डायगोनल जैसा ही बन रहा है, तो वेव 1 बड़ा है, वेव 3 हमारा फिर भी लगभग अगर देखें 15,800 से 18,800, 15,200 से 18,800, 3700 पॉइंट का है. तो वेव 5 किसी भी रूल को वायलेट करे बिना कम से कम 3700 पॉइंट तक तो जा सकता है. तो अगर 16,800 से 3700 पॉइंट भी देखते हैं तो मतलब 20,500 तक का टारगेट खुला हुआ है. तो अभी तो हम 19,000 ही हैं. अगर सर का पैटर्न भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, सब कुछ सही है, तब भी यही स्ट्रक्चर में मार्केट शायद 20,500 तक भी जा सकता है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर को ऐसा क्यों लग रहा है कि वेव 5 यहाँ पे डन हो चुका है? तो आप वेट कर लो 20,500 तक. नहीं सर, वेट नहीं कर रहे, मैं आपसे लर्निंग पर्पज से पूछ रहा हूँ. बिल्कुल ऐसा कुछ वो ट्रोलिंग नहीं है, बिल्कुल मैं प्रॉपर लर्निंग पर्पज से पूछ रहा हूँ कि आपको क्या सिग्नल देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये. Anant, I think you are saying A, B, C, D, E and he's saying 1, 2, 3, 4, 5. That is probably the reason for the. हाँ exactly. I am talking a double zigzag here. He is talking about a impulse here. वो impulse नहीं बैठता है इधर. If you go by the last wave of the or all waves of the ending diagonal have to be corrective in structure. करेक्ट. 333 मैं सर 3333 ही ले रहा हूँ. तो 14,140 से जो अपना 15,900 लगा वो A, फिर 15,900 पे थोड़ा साइडवेज दिया 4-5 हफ्ता B, और 18,600 तक C. फिर ये दोबारा से आपको डबल फ्लैट मार के 15,100 आया था, 15,200 वाला. फिर से आपको एक करेक्टिव 3 वेव स्ट्रक्चर ही दिया है 18,800 तक, और 18,800 से 16,800 भी 3 वेव ही गिना है.
तो ये वाला आपका डबल जिगजैग में मैं अभी मतलब जो आप बोल रहे हो कि पहला जिगजैग आपका 17,400-600 तक वहाँ पे बी वेव लो लगाया, 17,600 से फाइनल ये सी मार रहा है। अब जो सी है वो डबल जिगजैग में मतलब सी जो है वो तो इम्पल्स इन इटसेल्फ हो सकता है ना, तो 16,600 से जो सी चल रहा है या थर्ड चल रहा है फिफ्थ कंप्लीट करने के लिए, वो तो इम्पल्सिव हो ही सकता है। तो उसका इंटरनल काउंट एक तो समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी चल रहा है उधर, सब डिवीजन है क्या नहीं है। तो मैं बड़े वाले वेव्स पे साइज के हिसाब से बोल रहा था कि 3 के छोटा रहते रहते भी 20-500 तक तो ये खींच ही सकता है। तो आपको क्या कन्विक्शन दे रहा है कि 19,000 पे लग गया? That is things beyond outside of Elliott wave. अच्छा, I'm not going purely by. See, Elliott मेरा primary tool है. अच्छा. My secondary tool is systems of Gann. So Elliott क्योंकि Elliott timing नहीं देता है, तो I need timing, so I use the systems of Gann. तो Gann का मैंने वो explain भी किया, why Uranus quarter cycle is spent, why sun went conjunct natal. Where did it go conjunct? Hang on, I don't even. इतने सारे देखते रहते हैं ना, तो ध्यान में ही नहीं रहता है क्या हो रहा है. हाँ, sun went conjunct natal Mars. Okay. Plus the biggest point right now is transit Mars is exactly square to transit Uranus, which is one of the most dangerous things to happen. Transit Mars to transit Uranus is the trigger for a large fall. Now, when is it done? It has done it yesterday. जी सर. So वो मेरा ट्रिगर है एक्चुअली, ट्रांजिट मार्स टू ट्रांजिट यूरेनस. एंड मेरे व्यू से बाकी पैटर्न स्टडी करने से यहाँ पे मार्केट गिरेगा क्या, बाय इटसेल्फ इट डज नॉट गिव यू एनी गारंटी. The pattern is suggesting right now that is what is going to happen. And transit Uranus, transit Mars, हर साल में in every 686 days you will get they will get this square 4 times. So there are 4 times in a year when there will be sudden steep falls in the market. You go and study the past, and you will realize when it happened again, previously, and what happened at those times. Transit Mars, transit Uranus कब conjunct थे, आप स्टडी करो, आपको भी लेगा. So, जी सर, ठीक है. Okay, so don't go by just this. I don't go only by Elliott wave. नहीं सर, ठीक है, थैंक यू. Right. सर परमिशन, एक क्वेश्चन और है, मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो मतलब नॉट स्पेसिफिक, कोई भी आप देख लीजिए जिनको लगे कि आंसर कर सकते हैं. तो मतलब मैंने जिस तरह से भी ट्रेडिंग करा है, राइट, ऐसा लगता है कि डायरेक्शन गैस करने में मतलब आप तुक्का ही है, मतलब लगा लीजिए कुछ, बट एंड में तुक्का ही है, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी रहता है. तो डायरेक्शन गैस मत करिए. ऑलवेज ट्राई टू पिक अ ट्रेड फ्रॉम अ एरिया ऑफ वैल्यू जहाँ पे आपका गलती एक्सेप्ट करना बहुत आसान है. जैसे अभी मार्केट 18,900-800 पे खड़ा हुआ है, राइट. अब गैस करना कि ट्रू ब्रेकआउट है, 500 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे नहीं आता ना, मतलब ट्राई करने की ज़रूरत है. ऐसे ही यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, फेक ब्रेकआउट है, वो भी ट्राई करने की शायद ज़रूरत नहीं है, या मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस है वो कहता है कि ये नहीं कर पाऊंगा मैं. ठीक है, बट क्या मैं कर पाऊंगा वो ये है कि यहाँ पे ट्रेड लेने में ना गलती पकड़नी बहुत आसान है. अब जैसे अगर यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, मान के चलिए करके बैठ गया शॉर्ट, तो अगर यहाँ से 200 पॉइंट और बढ़ जाता है तो वो 200 पॉइंट का स्टॉप लेके छोड़ दूंगा, गलती मान लेंगे. अगर यहाँ पे अगर मैंने लॉन्ग लिया है तो ऐसा ही 18,600 बाई 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाएंगे, कि अगर वापस 18,600 से नीचे आ गया तो फिर भी गलत है, राइट. तो as a fundamental philosophy behind trading, where you're not trying to guess the direction, but you are always picking up trades from a potential area जहाँ पे आपका स्टॉप अच्छे से डिफाइन हो जाता है कि यार ऊपर जाना है तो 18,600 वापस नहीं आएगा, और अगर नीचे जाना है इसको तो यहाँ से अभी 18,800 पिछला टॉप है, वहाँ से 19,100 नहीं दिखाएगा शायद. तो एज इन दैट एज अ स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग, एंड दिस कैन बी डन एट ऑल टाइम फ्रेम. मतलब यहाँ पे ATH पे खड़े हैं तो एग्जांपल बहुत अच्छे से सूट करता है, but you can always sort of do this at major support resistances. You can do this at major swing high, swing lows, daily, weekly, जो भी आप कर रहे हैं. तो as in that as a strategy, would it work, would it not work, based on the experience that you have of so many years in the market?
If you don't know the trajectory of the market, everything else is pointless. Then you have to use stop loss and whatnot. Then when will you make money? सर मतलब अगर ट्रू ब्रेकआउट होगा तो अगर मैं 200 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ तो 19,500 तक भी जाता है तो 400 मिल गए, 1:2 का ट्रेड खत्म हो जाता है। और ऐसे ही अगर यहाँ से रिवर्सल होगा तो 19,100 आए बिना नीचे 18,500 दिखा देगा, वहां भी 400 पॉइंट मिल गए। तो आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते जा रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। No, if you are making money, it's nice, no? It's very good. सर ऐसे मतलब थोड़ा कन्विक्शन वाला आंसर नहीं लगा है, तो थोड़ा सा डिटेल आउट कर पाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, बात ये है ना, जब तुम बोलता है कि डायरेक्शन वो कुछ भी होने दो, हाँ तो मालूम पड़ना ही चाहिए भाई, नहीं तो आप पैसा कैसे बनाओगे हवा में? जी सर, ठीक है, थैंक यू। इसके लिए बोलता हूँ आँख का इस्तेमाल करो, आईज एंड माइंड। वो टूल्स वूल्स को गोली मारो, यूज योर आईज ऑलवेज। जी जी सर, थैंक यू। Can I ask a question? Yes. Yeah, good day to everybody. So just to add to the gentleman who was asking for the false breakout, true breakout, just sharing my view. You can have a look at 18th April 2019 candle and 10 January 2020. Look at those candles, you will get your answer. And my second question is to Rohit sir. वो चले गए। Oh my God. So Sharad Saab, I had asked you, sir, what is your opinion? I know your opinion, but still I'll ask. Intraday, if we do option trading or we should do positional. So just wanted to have a view. I think you are against intraday. I had asked earlier also. करो। जस्ट इंडाइसेस में ऑप्शन सेलिंग और स्ट्रेटजी के हिसाब से या पोजिशनल करना, आपका क्या व्यू है सर? इंडाइसेस में नहीं, बीच में क्रैक हुआ, आवाज मुझे सुनाई नहीं दिया बराबर से। सर इंडाइसेस में ओके, मतलब आप ऑप्शन मैं नहीं करता क्योंकि मालूम है जो भी करेगा 2-3 साल में उठ जाएगा। बराबर, ओके। एंड पोजिशनली अगर हम करें तो वो बेहतर रहेगा। पोजिशनल अगर हम करें, पोजिशनल इंडाइसेस ट्रेडिंग, वो दैट इज फेयर इनफ। ओके, बट व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? Sir, I started with stocks, but I just came to indices for percentage ROI basis and to get into depth of things. But now I am in a bit of dilemma whether I should go back to my earlier stock thing, which was much better than this thing. So just asking for your, आप तो 40 years experienced है market में. Another one thing which I wanted to ask sir, आपने last time जब भी बात कर रहे थे, you said that you have at least 10 hours of sleep every day. So how does your day pan out? आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? क्योंकि इतना मार्केट में एक्टिव रहना है, तो आपने बोला था एनर्जी बहुत लगता है, तो कैन यू जस्ट इफ इट्स पॉसिबल? 11-12 बजे सो जाता हूँ। ओके। अब 5-6 बजे उठ जाता हूँ। तो सर आप तो फिर 5 घंटा सो रहे हैं ना सुबह? अच्छा चलो, अब एक्चुअली है ना राजू भाई। हाँ सर। थोड़ा आप वो चेंज लाओ, वो सुनने को सीखो। ओके सर, आई एम लिसनिंग। बोल रहा था, मैंने खत्म नहीं किया। फिर मैं सो जाता हूँ 8 बजे, फिर मैं उठता हूँ 8:45 बजे,
फिर बीच में आधा घंटा सोता हूँ बाजार बंद होने के बाद में 2.5 घंटा सोता हूँ, तो आप गिनती मान लो हो जाता है 10 घंटा। I was also struggling with my sleep, like मेरा भी 5 घंटे का रात का होता है फिर, but I struggle during the day, but I understand कि बीच बीच में naps लेने से वो accumulate हो जाता है. Okay sir, now I got it. Thank you. थैंक यू। हाँ बोलिए। सर नमस्ते परिमल। सर मेरा क्वेश्चन आपसे, अनंत सर से और शिनी सर से है। सर 9:15 से आई मीन 3:30 ये जो मार्केट टाइम छोड़ के आप आज भी कितना टाइम स्टडी पे बिताते हैं सर मार्केट के? आपके पास रफली 45 साल से लेके 25 साल तक का एक्सपीरियंस है तीनों के पास, तो आज ये 6-6.5 घंटे का टाइम छोड़ के आप कितना टाइम और स्टडी करते हैं सर? मैं सुबह में 2 घंटा। ओके बोलो। अनंत सर, शिनी सर। और 2 घंटा बहुत होता है। ओके सर। हाँ शिनी सर बता। I eat, drink, sleep, breathe, smoke, everything only stocks. So 24/7 sir? Yes, 24. Whenever I am not sleeping, I have something or the other going on. I am either making videos on technical analysis, I am looking at the charts, I am studying something to help me make the videos. अभी live streaming चालू किया है तो I am studying that software called OBS and how to improve that and a lot of other things. So all my things are focused around the stock market. तो मैं पावर पॉइंट भी सीख रहा हूँ तो इट इज नॉट पावर पॉइंट फॉर मी, इट इज स्टडिंग फॉर द मार्केट. मैं वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा हूँ तो इट इज स्टडिंग फॉर द मार्केट. मैं एआई सीख रहा हूँ फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड वॉइस थिंग, द मेकिंग द वॉइस फ्रॉम टेक्स्ट, दैट इज आल्सो फॉर द स्टॉक मार्केट. सो 24/7 आई ओनली ईट, ब्रीथ, ड्रिंक एंड डू फॉर स्टॉक मार्केट, नथिंग एल्स. पिछले अभी 2023 हो गया ना, 42 years I have only done this and nothing else. Sir. Okay, so it is not like 24 घंटा चार्ट नहीं देखते. कई बार चार्ट देखने के लिए अगर see on an average I see all the NSE F&O stocks chart on 5-minute charts. For it takes me about 20 minutes to see all the 200 charts. उससे ज्यादा नहीं लगता है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है एक चार्ट देखने के लिए. बट दैट डजंट मीन, सो देयर आर स्पेसिफिक पैटर्न्स व्हिच आई एम लुकिंग फॉर इन द चार्ट. वो दिखा तो आगे बढ़े, नहीं दिखा तो वहीं पे रोक दिया, बस दैट्स इट. इट जस्ट टेक्स 10 seconds टू सी. जो अच्छा लगा, जो समझ में आया, जो इट इज इमीडिएटली स्ट्राइकिंग योर आई, दोज आर द ओनली थिंग्स, stocks that you are looking at. So my way of looking at the market is very different. I am more a pattern person than a quantitative moving average person or any of those study person. So for me the pattern is primary. उसके बाद में अगर सब ठीक लगा, then I will go look at the secondary things. Till then I don't look at the others. So on an average, if you're looking at a chart, if you have the knowledge and the skill, it should not take more than 10 to 15 seconds. That's it. Sir. पकड़ लो तो कभी आधा घंटा, और कभी जैसे आज बैठने वाला हूँ, I will sit in the evening today for a long term study of the chart, then it will go for 4 to 6 hours. Okay, that's it. Daksh. Hi everyone, thank you. Sir, my question is कि फंडामेंटल से रिलेटेड है, टेक्निकल तो हम सब करते हैं. जैसे यील्ड कर्व इन्वर्टेड है, राइट? अभी तक का सबसे डीपेस्ट इन्वर्टेड यील्ड कर्व है यूएस का, which is 20% डिफरेंस बिटवीन द 10 year बात करना, तू इंडिया का बात करना यार, छोड़ना अमेरिका का. हाँ सर, तो उसका इफेक्ट अगर वहां पे बड़ा फॉल होता है तो हमें यहाँ पे बड़ा शॉर्ट अगर ढूंढना हो तो उसके लिए कैसे आप फिगर आउट करते हैं? यार उधर इन्वर्ट होएगा तो इधर बेचेगा, ऐसा थोड़ी है यार. बट हिस्टोरिकली तो सर हर रिसेशन में यूएस के भी मार्केट इफेक्ट हुआ है इंडिया का.
I don't have an answer to you. I am only India focused. उधर उधर का मालूम नहीं है मेरे को. इधर वीक बैलेंस शीट है वो बेचो, जो स्ट्रॉन्ग है वो ले, बस खत्म. सिंपल में सिंपल बात है. इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करता है मेरे दोस्त? कुछ नहीं मिलेगा तेरे को लाइफ में एक्सेप्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आर्ग्यूइंग. If you want that, I can argue with you for hours together, and we will conclude that none of this will help you in making money tomorrow. Right, sir. One more question, sir. There are some months कि जिसमें ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है या बहुत कम बनता है. There could be 1, 2, 3 months और उसके बाद इकट्ठा पैसा बन जाता है. तो वो जो उन महीनों में जब पैसा नहीं बनता है तो हाउ, आप इतने पुराने हैं तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं साइकोलॉजी को उस टाइम, और कितना अग्रेसिव जाते हैं या कितना नहीं एग्रेसिव नहीं होने का. जब भी अपना चलता नहीं है ना, चुपचाप बैठने का. ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनने का. थैंक यू सर. या लेट. सर मेरा सवाल आनंद जी से था, बताते हुए चले गया. तो सर मेरे को थोड़ा सा वीकली चार्ट पे पूछना था कि ये कुछ नेक्स्ट 5-7 महीने में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा क्या? कुछ लोअर लेवल्स दिखेंगे इंडेक्स में नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में? वो चले गए आनंद भाई, चले गए. आप सर थोड़ा गाइड कर दो. नहीं, मैं इंडेक्स का बात ही नहीं करता हूँ. फालतू में फालतू चीजें वो. आपको मुबारक. चलिए, और कौन है? हर्षित पटेल. हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन. दिस इज हर्षिल. एक्चुअली मेरे को शरद जी एक्चुअली 2 स्टॉक के लिए पूछना है, अगर आप मुझे बता सकते हो, या कोई भी किसी को भी बता सकता है, तो बिकॉज आई डोंट डू F&O और मुझे स्टॉक में ही इंटरेस्ट है. तो एक स्टॉक है इंडो स्टार कैपिटल, उसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ. आई इन्वेस्टेड एट ए वेरी हायर लेवल, 240 या 30 के भाव से था. बाद में आई यूज्ड टू डू एन एवरेजिंग, तो मेरा बाइंग चलता रहता है छोटा मोटा. और दूसरा स्टॉक है HDFC. So I understand that you have certain views on HDFC, but what I am thinking, what how do I look into it, that since HDFC has not moved since last 2 years, right? So do we think that maybe when every other things get cooled down, then HDFC, Reliance, TCS will come out and getting into a mode to give better return? HDFC तो खत्म हो रहा है ना अभी 1-2 में. Then HDFC Bank. ठीक है, अच्छा है, रखो. क्या है? इंडो स्टार अभी क्या भाव? 150. 150 है. बढ़ सकता है. वो ब्लैकस्टोन या ब्लैक रॉक ने लिया है तो करेक्ट. अच्छा है. एक बार बड़ा एवरेज मार दो ना तो पैसा निकल आएगा आपका. थैंक यू सर. और पीटीसी में आपका क्या इंटरेस्ट? पीटीसी में आपको क्या लगता है सर? पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. आई हैव सर्टेन, मैं उसमें एसआईपी चलता रहता है पीटीसी में. इवन इंडोस्टार में भी एसआईपी चलता रहता है. तो ये सब, ये ब्लू चिप नहीं बन सकता है कभी भी. हाँ करेक्ट. ब्लू चिप चाहिए भी नहीं सर, ब्लू चिप चाहिए भी नहीं. अगर साल का वो 15-20% का रिटर्न दे देता है, 15-20% में भी 30-40%, then it's okay. I'll make an exit and I'll identify another stocks. ठीक है, ये आपका सोच है तो बराबर है. सर आपका टेक्सटाइल सेक्टर में क्या राय है? और डूबा हुआ है. ये डूबा हुआ इसीलिए, मरा हुआ इसीलिए उसको पकड़ना है. पकड़ो ना. मैं कि वर्धमान टेक्सटाइल में चलता रहता हूँ, मतलब वर्धमान टेक्सटाइल में आई हैव सर्टेन होल्डिंग. अब क्या भाव है? अभी है 366. बढ़िया.
चलिए और कोई अपने एमएस बोलो। क्या है आपका? हाँ किस पे? हेलो, कोई हाँ व्यू सर आपका? किस में? Sir, what's your view on about India for long term? I have started accumulating the stock recently, so I would like to know your view on this. Sharad sir, please. व्यू सर आपका इस साल का नजरिए से? कौन सा ओएनजीसी? हेलो अमित भाई, ओएनजीसी का पूछ रहे हो क्या? He can't hear. And somebody asked about Abbott. Yes, sir. अच्छा है, अच्छा है। ओएनजीसी अच्छा है ना सर? हाँ अच्छा है। ठीक है एमएस सर, एलेंटेक बेक इंडिया के बारे में कुछ बताओ ना सर। हाँ क्या? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, नमस्कार। मेरे को ये जानना है कि एक तो मेरा अतुल में इंटरेस्ट बना है, अतुल का मैंने एक फ्यूचर लिया है जुलाई सीरीज के लिए। आप फार्मा में या किस में मेरे को कोई 2-4 कोई पॉइंट्स बता सकते हो कि जिसमें रहना चाहिए? नहीं, आइडिया नहीं है भाई, आइडिया नहीं। अपना सिर्फ एक ही फोकस है, कैपिटल गुड्स और फाइनेंस कंपनीज बस। अच्छा जी, फाइनेंस कंपनी में एनबीएफसीज कौन सी अभी लेनी चाहिए? कह रहे हैं कि एनबीएफसी अच्छा रहेगा। और थर्मेक्स और एनबीएफसी में फ्यूचर में नहीं है। नहीं, थर्मेक्स फ्यूचर में नहीं है। थर्मेक्स तो कैश करना पड़ेगा। फ्यूचर में कौन सा ठीक रहेगा एफ&ओ सीरीज जुलाई के लिए? इसमें कैपिटल गुड्स क्यूमिंस, एबीबी, लार्सन, सीमेंस कुछ भी ले लो। अच्छा जी। और इसमें अपना एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस में एंटर करना चाहिए अभी? वो आप देख लो, वो चोला अच्छा लगता है। अच्छा, चोला इन्वेस्टमेंट 750 वाला? नहीं, 1110 1110 वाला। अच्छा जी, उसका फ्यूचर लिया जा सकता है जुलाई सीरीज के लिए। ठीक है। और ये 4 हैं, सीमेंस, थर्मेक्स, एबीबी। इसमें कोई चॉइस आपकी बढ़िया लगता हो आपको जो आज के चार्ट के हिसाब से? आपको एक बात बोलूं, और मुफ्त का एडवाइस का कोई वैल्यू नहीं है। वेरी राइट। ठीक है सर, ओके। मुफ्त वाली बात नहीं, मैं तो आपका एक्सपीरियंस देख रहा था, क्योंकि मैं इसमें कैपिटल सेक्टर में ज्यादा काम नहीं किया, इसलिए कि लेना भी एक ही चाहता हूँ। 4 बताए नाम तो आपने बढ़िया बता दिए, बट इसमें क्या कि कौन सा बेटर लगता है जुलाई सीरीज के हिसाब से? मत लेना यार, मत लेना, काम का पैसा आ जाएगा, तकलीफ होएगा फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, रुक जाते हैं। पैसा आ जाएगा, क्यों चाहिए ऐसा काम करने का? जिधर पैसा लगे उधर ही काम करने का ना अपने को। हाँ जी, उधर ही करना चाहिए। तो आपका ओपिनियन क्या है वो जानना चाहता था। क्यूमिंस। ठीक है सर, ठीक है सर, दैट्स राइट, थैंक यू वेरी मच। कुमार जी देवदास। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर, बजाज फिनसर्व का नेक्स्ट 5-6 इयर्स में क्या व्यू है आपका? अच्छा है। ओके सर, अभी मार्केट 1518 पे चल रहा है, मेरे पोजीशंस मिल गया, तो नेक्स्ट 5-6 इयर्स के लिए सर ठीक ही है ना सर आपके? अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। Sharad sir, your view on Elantas Beck India? Who asked this? व्यू अच्छा है भाई, रखो। 25-30 हजार होएगा। थैंक यू सर। अब बोलो भाई सत्य। सत्येंद्र सिंह।
गुड मॉर्निंग सर। फर्स्टली ईद मुबारक सर आपको। सर कोई स्टॉक एडवाइज कर दीजिए कि 5 साल बाद जो ईद आए बहुत खुशी वाली आ जाए। नहीं ऐसे ही क्या बात है। ले लो वेस्ट लाइफ ले लो। बेस्ट लाइफ सर। ओके थैंक यू सर। बोलिए महफूज आलम, बोलिए महफूज जी। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अजय या हेलो सर, शरद सर कैसे हो? हाँ मजे में भाई, मजे हाँ सर, ये पूछना था, एक क्वेश्चन ऐसा था कि मार्केट इतना भी 19,000 क्रॉस किया है। प्रीवियसली से 1-2 महीने पहले लग रहा था कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। रीजन क्या था सर इतना ऊपर आने का सर? अरे छोड़ना यार, ऊपर है या नीचे उसका रीजन मत ढूंढ। कल क्या मिलेगा रीजन जान के। यस बेटा। सर अभी देखिए जो ग्लोबल सिचुएशन है अभी जियो अरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, इंडिया का बात कर। ठीक है सर, बस वही इतना व्यू जानना था। इतना ऊपर आया बट स्टॉक में तो कुछ मूवमेंट नहीं हुई ना, बस मार्केट इंडेक्स को ऊपर रखा हुआ है। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। वो अच्छा स्टॉक ले हो। हेलो, या सबका आवाज नहीं अच्छा स्टॉक ले हो, पैसा बनेगा। यस यस यस, ठीक है चलेगा सर। थैंक यू सो मच सर। सचिन सर अदानी पे कोई राय? हाँ क्या सर अदानी पे कोई राय? अभी कोई राय नहीं, कल जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर? नहीं कोई राय नहीं। जिस गली में जाना नहीं उधर का क्या मुंह देखना, छोड़ो ना यार। हम ठहरे ये भी कमिंग्स वाले, तुम हमको अडानी में लेके जाते हैं। चलो महफूज भाई। अब प्रशांत भाई बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर आपका आईटीडी सीमेंटेशन पे व्यू चाहिए था। नो व्यू। अजय भाई बोलिए। अकी हो गया आपको? So, Sachin bhai. Okay, we don't have any more speakers. We'll call it a day. Thank you very much. See you next week. Trade wise, trade good, sleep well, spread love and friendship everywhere. Okay, yeah. Kishan. Yes, Kishan. Yeah, Kishan. किशन जी बोलिए ना। स्टडी करते हो ओके सर, बैलेंस शीट जो स्टडी करते हो, किशन बोल रहा हूँ। एक्चुअली ना 3 इयर्स या 1 इयर्स में ज्यादा आप फोकस करते हो? एक क्वार्टर का। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और तो सर कोटक बैंक में आपका क्या व्यू है सर? ये गिर क्यों रहा है सर कोटक बैंक जो है इतना ज्यादा? बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा, अभी गिर रहा है तो बढ़ेगा। अरे आप लोग काहे को 3-4 लाख वाला कंपनी लेता है, 3-4 लाख करोड़ का। पता नहीं आपके पास कितना पैसा है, 100-200 करोड़ है तो ठीक है। छोटा पैसा है तो उधर निवेश नहीं करना चाहिए। सर मिड कैप में कोई आपकी राय, किसी के ऊपर फोकस करना है 1 इयर्स के लिए? नहीं बताया। वेस्ट लाइफ तो बोला था, अभी बार बार कितनी बार बोलेगा यार। चलिए, सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
Be good to everybody around. See you next week. Trade wise, trade good. Don't take unnecessary chances in life. Thank you.